परम पिता बाबा की जय। महाकाल बाबा की जय। भक्त प्यारे बाबा की जय। जय। सभी का हार्दिक स्वागत। जी बाबा। नमस्कार, प्रणाम सभी को। और आज हमारे साथ जो हैं डॉक्टर पॉल रॉबर्ट एवर्स ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर पॉल रॉबर्ट एवर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. He is a naturopathist, herbal medicine, and he has so many diploma and degrees: clinical hypnotherapy, iridology, and touch-based some treatment. तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और वो वेलनेस में जो है कोई भी इश्यूज डिजीज़ उनकी रेमेडी के लिए बहुत विख्यात हैं और आज हम लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू डॉक्टर पॉल एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट कन्वे फॉर 20-25 minutes regarding what is general wellness and how we should keep ourselves in the best of our physical and mental health. And then whatever question answers will be there, that session we will conduct later on. But first, now it is your turn and you just address the gathering. So many people are there. You may convey us in English and two to three lines, and then Mr. Nirupam is there. He will just translate it into Hindi and convey to all of us. Like that we will move. Is that okay, Dada? That is perfectly fine. Okay. So just I am spotlighting you, and Mhm. we all welcome here in India, Bhutan, California. So many people have joined from so many countries to just to listen your address. So we all welcome you. Please, you start. Well, thank you all for having me. It's a great honor to be here. And if I were to begin, my name is Paul Evers, as you know. I'm in Australia and I'm 64 years of age. And I've been studying health since 1988. So I don't know, तो with my दादा सबका interpreter. धन्यवाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनके लिए गौरव की बात है कि वो यहाँ पे मौजूद हैं. Am I Mhm. audible? Yes, you are audible. Yes, thank you. Yeah. Yeah. To दादा answer the बोल question, you let me know when you've finished interpreting me so I can continue. we can do it in a way that निरुपम दादा उनकी बात को ना पूरा करके आप उनको कन्वे करो. ओके ओके फाइन. ओके करके no तो आप we can do like you start speaking, I'll listen to all of that and then I'll convert. When I stop, you start speaking. When you stop, I start speaking. Does that All work right, for you? let's All right. continue. So In all my years of study, I've studied European, Unani, Ayurvedic, Chinese medicine systems. I have looked at the North American medical systems as well as the South American. I've spent many years in the Pacific region, specifically in Fiji, studying the Polynesian and Melanesian. And so to bring all of that together into one understanding of health is my main aim for my existence here. दादा बोल रहे हैं कि दादा ने कई जगह पढ़ाई किया है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिजी, पैसिफिक, एशिया के अलग अलग कंट्रीज में. तो सबका एक समावेश लाने का वो कोशिश करें, सबको जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो 1988 से इस फील्ड में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं. तो करीब करीब 38 साल हो गया है. तो वो सारा एक्सपीरियंस को समेट के उसको एक बनाने का कोशिश कर रहे हैं और उसको एक मुख्य धारा में लाने का कोशिश कर रहे हैं. So the definition of what we call healthy is the ability to function
to your capacity, as in your desires of what you want to do, with happiness, and contentment. So here with that statement, we have the mind and body connection. One cannot operate without the other. So with right thinking and a good mental function and emotional balance, generally good health follows. And good health for the body is a lot simpler. So we have nutrition, we have medicine, and we have tools to help the body function at its optimum. So the duality between the mind and body is the primary starting point of any health system. And the Ayurvedic system being one of the oldest, and the Unani system being equally old. This was primarily the starting point for all of these ancient systems coming out of Southeast Asia, India, Arabia. So, yes, before we go any deeper, it is the mind and body and the history of that, the tradition of that coming out of East Asia. दादा बोल रहे हैं कि ये हेल्दी का डेफिनेशन जो हम बोलते हैं कि कोई इंसान स्वस्थ है, उसका डेफिनेशन ये होता है कि वो जो भी करना चाहता है वो उसको कर ले और खुशी खुशी करे। और सबसे पुराने अगर ग्रंथों को देखा जाए, पकड़ा जाए कि ये नेचुरोपैथी या आयुर्वेद कहाँ से शुरुआत हुआ उसका, तो उसका ओरिजिन्स वैदिक और यूनानी टीचिंग्स में दिखता है, हमें मिलता है हमें। और हम लोग और दादा बोल रहे हैं कि इन सभी को समाविष्ट करके वो एक साथ लाने का कोशिश कर रहे हैं। जी दादा। So, if I were to continue on this, and I notice that this group is spiritual and emotionally founded to help humanity and help other people, and in so doing, help yourselves on this path that we all find ourselves on. With the importance of the mind and the body, we must first understand that the mind is merely a functioning physical organ, and the body likewise is a functioning physical organ. The ability to understand that these are basically just tools that we're given for this life. Well, it's like a motor vehicle or it's like a house. We repair it, we repair them, and in most cases, we actually take better care of our homes or our vehicles or our possessions than we do of our own bodies and minds. दादा बोल रहे हैं कि जैसे स्वस्थ का डेफिनेशन था कि मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहना चाहिए। तो मन और शरीर को अगर देखा जाए तो दोनों ही एक इंस्ट्रूमेंट है, दोनों ही एक मशीन जैसा है, एक भौतिक ऑर्गन जैसा है दोनों। कि मन डायरेक्शन देता है और शरीर उसका अनुपालन करता है, लेकिन दोनों ही एक तरह से ऑर्गन है। तो जैसे हम अपनी गाड़ियों का या अपने टूल्स, अपने औजारों का ख्याल रखते हैं, उसको एसेट की तरह उसको लगातार क्लीन करते हैं या मेंटेनेंस उसका करते रहते हैं, उस तरह से हमको मन और शरीर का भी मेंटेनेंस करना चाहिए ताकि वो ढंग से काम कर पाए, ढंग से फंक्शन कर पाए। So, understanding that the body is the physical manifestation of our existence, and therefore it is in a way separate from our conscious mind. We then have control, or we have intellectual control over our bodies. Our bodies are not meant to dictate to us what happens. We dictate to our bodies what happens. तो शरीर और मन के बीच में एक रिश्ता होता है
और ऐसा नहीं है कि हमारा मन जो है वो शरीर को कंट्रोल करता है। जब शरीर हमारे मन को कंट्रोल करने लगता है तब एक दिक्कत हो जाता है। एक आध्यात्मिक तरंग है, एक आध्यात्मिक फ्लो है जिसके कारण ये मन और शरीर एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ फंक्शन कर पाता है, साथ में एक सामंजस्य बैठा पाता है। लेकिन जब उसमें ये हो जाता है कि शरीर मन को कंट्रोल करने लगता है, शरीर जैसा चाहता है मन वैसा फंक्शन करने लगता है, तब दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। Mhm. So I studied clinical hypnotherapy to understand prayer. And in clinical hypnotherapy, it is a very powerful tool to bring about physical and emotional change within the body. Now, if I can do that merely by speaking to someone, merely by putting them into a deep, relaxed state, then the mind is very, very powerful and important in the discussion we are going to have. In the same manner, meditation and prayer are also powerful, but without the guided aspect from a practitioner, then they're not as specific, but they are still powerful. दादा बोल रहे हैं कि उन्होंने हिप्नोथेरेपी की पढ़ाई की है, तो उसमें ऑटो सजेशन वगैरह के द्वारा शरीर और मन को शांत किया जाता है, उसको सजेशन दिया जाता है कि आप ठीक से फंक्शन कर रहे हैं। और दादा बोलते हैं कि बॉडी को हम क्या है कि हिप्नोथेरेपी में हम बोल के, जो हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं वो बोल के एक अगले इंसान का कंसेंट लेके उसको एक ट्रांस के स्टेट में भेज देते हैं जहाँ पे वो उनके बॉडी को भी रिलैक्स करते हैं और माइंड को भी रिलैक्स करते हैं। तो इसके द्वारा ही उन्होंने प्रेयर को सीखा है, और दादा बोलते हैं कि प्रेयर और मेडिटेशन दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि शरीर और मन जो है उसमें एक सामंजस्य बैठे, उसको रिलैक्सेशन मिले। और उसमें कुछ चेंजेस अगर किया जा सकता है तो इन्हीं दोनों माध्यम के द्वारा किया जा सकता है। Mhm. So, with the now separation of the conscious mind, we come down to the body. The body generally is made up of several systems. We have the nervous system, we have the skeletal system, the cardiovascular, the pulmonary, and then these systems are better understood by us if we can understand the mechanics of them. So it's very, very basic. And by being basic, then everyone has the power to change them or enhance them. They just need to have the right advice and the right direction. दादा बोल रहे हैं कि बॉडी में बहुत तरह का सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, तो बहुत सारे सिस्टम को मिला के हमारा शरीर बनता है। और उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसको ऑल्टर किया जा सकता है, आ, मतलब थेरेपी देके या फिर आ, जो हिप्नोथेरेपी है उसको देके उसको ऑल्टर किया जा सकता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से पूरा फंक्शनिंग अगर वो गलत हो गया है तो उसको सुचारू ढंग से थेरेपी के माध्यम से उसको वापस से रीडायरेक्ट करके वापस से उसको ठीक किया जा सकता है। Mhm. So to have a pain-free and highly functioning health experience is something that everyone can achieve, even if there are challenges, per se, diseases, we have injury, we have all these things. If we adapt our mind to our current challenge, and then we work on the body to rectify or rebalance, then we can basically achieve a quality of life that should be yeah, largely free of medical
interventions such as surgery, etc. Not in all cases. Surgery is a wonderful aspect to it, and we find that in Delhi there is a location where we have a history of brain surgery over 2,000 years ago. So surgery has its place, but really for my focus is to avoid hospitals and to avoid as much as possible medical need, so that yes, we can say that we are having a pain-free and problem-free existence day to day. दादा कहते हैं कि इंसान के जीवन से जो पेन है, जो दर्द है या चोट लगा है या कुछ ऐसा शरीर में एलिमेंट आ गया है, इतनी विषाक्तता या फिर पूरी तरह से शरीर डैमेज हो गया है कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग करना बंद कर दिया है, तो उसको भी हिप्नोथेरेपी से या फिर नेचुरोथेरेपी से उसको इस तरह का बनाया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है उसके स्ट्रक्चर को, कि वो एक पेनलेस जीवन बिता सके जहाँ पे उसको कष्ट भोग ना करना पड़े, वो एक नॉर्मल सुचारू जीवन जी सकता है। सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट के रूप में देखना चाहिए कि मतलब कुछ नहीं हो सकता है तब हम उस पे जा रहे हैं, बिना सर्जरी कराए भी जिंदगी जिया जा सकता है। लेकिन सर्जरी बुरा नहीं है अगर और कुछ बाकी नहीं रह रहा, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, तो फिर सर्जरी एक ऑप्शन रहता है। लेकिन उसके अगर वो ज़रूरी नहीं है तो उसके बिना भी लाइफ को लीड किया जा सकता है थेरेपी के द्वारा। जो दादा बोल रहे थे कि हम शारीरिक स्ट्रक्चर को या मानसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, जिससे वो एक बिना कष्ट लिए जीवन वो यापन नॉर्मली कर सकता है। जी दादा। Mhm. So health is the responsibility of all, and health, you can, in my practice and in my years, I have met many people that do not want to get better. They choose their disease. They want to stay ill. So on the other hand, let's say 60 or 70% of people adopt change, adopt advice, and they move on. So health is a decision of the individual, primarily first, not the doctor. तो हेल्थ जो है वो उस इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको इधर एलिमेंट आया है या फिर वो नॉर्मली भी अपना जीवन यापन कर रहा है, तो हर एक का हेल्थ उसका इंडिविजुअल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जी डॉक्टर उसमें एक बहुत बड़ा टूल बनते हैं, बहुत बड़े सहायक होते हैं, लेकिन अंत में वो जिम्मेदारी जो होता है वो इंसान का होता है, उसका हेल्थ उसका खुद का जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि उसको एडवाइस दे सकते हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप इससे ठीक हो जाओगे, ये अवॉइड करो। उनका रोल बेसिकली प्रिवेंटेटिव होना चाहिए रादर देन क्यूरेटिव, कि कुछ बहुत बड़ा हो गया तो गाड़ी को रिपेयर करने के लिए वहाँ पे लेके गए हैं। तो वो जो एडवाइस दे दिया गया है उसके ऊपर फॉलो करे, लेकिन उसका हेल्थ उसका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जी Mhm. दादा। To look at the history of Ayurvedic, Unani, European, around the world, most of our modern drugs today are still derived from herbal medicine. अगर हम इतिहास देखें, वैदिक का, यूनानी का और यूरोपियन हिस्ट्री का, जो भी मेडिसिनल हिस्ट्री है, तो जितने भी मेडिसिन्स की उपज हुई है, जहाँ से उनका प्रोक्योरमेंट हुआ है, इजाद हुआ है, वो हर्ब से हुआ है। वो नॉर्मल प्लांट्स से मतलब बार बार ट्रायल एंड टेस्ट करके कि ये इस डिजीज में काम करता है, ये इसमें काम करता है, उस तरह से उनका इजाद हुआ है, उनको खोजा गया है। तो ज़्यादातर सबका अगर रूट चेक करने के लिए जाएं हम, तो वो एक पौधे को ही डिनोट करता है कि इंसान पौधों से ही खुद का उपचार करता करता
आज इतना मेडिसिन को डेवलप कर पाया है। तो उसका शुरुआत पौधों से ही हुआ है। जी दादा। Mhm. Now, in saying that, I am very much in favor of modern medicine. I think modern medicine is saving countless lives every day. Yet, we rely on it too much. We rely on the pharmaceutical drugs, we rely on the hospitals, we rely on surgery. There is no, we can remove that by 80% if we take responsibility for ourselves and we have the right information. दादा कहते हैं कि वो बिल्कुल फेवर में है। आज का जो मॉडर्न ड्रग्स, मॉडर्न मेडिसिन जो डेवलप हुआ है, जो इसको अंग्रेजी दवाई हम लोग बोलते हैं, उसके कम्प्लीटली फेवर में है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा रोग है जिसको जिसके लिए वो वरदान साबित हुआ है। जैसे पहले देखा जाए, अगर 100-200 साल पहले, तो लोग 20-20 30-30 साल की उम्र में मर जाते थे छोटी छोटी डिजीजेस से। तो ये एक वरदान है ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हम उस पर रिलाई करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं मेडिसिन के ऊपर, कि उसके कारण ही हम जिंदा रह पा रहे हैं। इंसान अब दवाइयाँ गोलियां खा के जिंदा रह रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए कि मतलब उस पे डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। ठीक है, बीच में कुछ हो गया, कुछ बहुत ड्रास्टिक हो गया है, आपको जीवन बचाने के लिए कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं बच रहा है, तब आप उस दवाई को लीजिए, लेकिन उस पे डिपेंडेंसी मत बढ़ाइए अपना। और 80% जो आपका डिजीज है वो आप घर बैठे उसका उपचार कर सकते हैं। इसलिए नेचुरोपैथी है, इसलिए आपके पास आयुर्वेद है, क्योंकि उनका ज़रूरत नहीं है। वो 80-90% डिजीज खुद से क्योर किया जा सकता है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहे, अगर आप अवेयर हैं अपने हेल्थ के बारे में, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आपका डाइट किस तरह का होना चाहिए, तो आप खुद से अपना हेल्थ को संभाल सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी दादा। Mhm. So and I'm assuming I will be getting a fair few questions from you all. Let's just start with a very simple example. When we look at the key word in all of this is balance, balance in mind and balance in body. So when we look at a diet, when we look at a Western diet full of sugar, full of carbohydrate, um, it is it is damaging millions of people every day. But likewise, on the other side, we have the vegetarian diet, the pure diet of India and the Hindus, and yet there are problems with this diet as well. And one is, as we age and we are purely vegetarian, we run deficient in protein, and this is a disease called sarcopenia, and this leads to heart attack, and this leads to thyroid disease. This leads to early aging. So we have to seek a balance in all that we do, not only the medicine, the diet, but also our lifestyle. अ, दादा बोल रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क बीच बीच में आ रहा है जा रहा है, तो मुझे इतना समझ में आया। दादा बोल रहे हैं कि एक बैलेंस का ज़रूरत है, जिसमें क्या होता है कि शरीर और मन दोनों को ही बैलेंस का आवश्यकता है। बिना बैलेंस का कुछ भी नहीं हो पाता है। तो जैसे वेस्टर्न डाइट को हम देखें, मैं हम मैं यूरोपियन बोल रहा हूँ डाइट को देखें। दादा, उसमें बोल रहे हैं कि जो अभी आप सुन नहीं पाए पूरा, कि वेस्टर्न स्टाइल में जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स और शुगर वगैरह बहुत होती है, उनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इंडियन जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे जो खाते पीते हैं यहाँ पे, वो कंपेरेटिवली कम होता है, लेकिन इनको भी प्रॉब्लम आती हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं वेस्टर्न लाइफस्टाइल में भी है, इंडियन इधर लाइफस्टाइल में भी है। तो इम्पोर्टेंट है, खाना पीना तो सुधार करना ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि लाइफस्टाइल की, उसको बदलाव बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू चेंज अवर लाइफस्टाइल मेनली, तो उससे जो है इन प्रॉब्लम्स पे रिकवरी हो सकती है। यस प्लीज पॉल। Mhm. So with my invitation, I will try and bring that foundation that we've just talked about to solutions if I can help anyone with them, and we can discuss these things further. I leave it open to everybody else.
दादा माइक को ओपन करना चाहते हैं सबके लिए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को उनके समक्ष रख सकते हैं और दादा उसके आपके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, उसका सोल्यूशन फाइंड करने का एक कोशिश एक एक करेंगे। एक एक करके आप एक एक बोलेंगे, करके। और हिंदी में बताएंगे या इंग्लिश में डायरेक्टली, या तो निरुपम दादा या मैं जो है उनको दादा को कन्वे कर देंगे। कोई भी अपनी प्रॉब्लम, कोई भी चीज। ओमान, दादा वांट टू से नमस्कार। समथिंग? जी नमस्कार दादा दादा, बोलिए। दादा मैं विजय बात क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जी दादा पूछिए। ये जो साइकिल डिजीज होता है जिसको पागल हो जाता है, वो क्या होता है कि किसी का बात ही नहीं मानता, वो डाइट भी नहीं मानता, लेकिन आखिरकार मुझे उसको ठीक करना है। तो ये ग्रेट चैलेंज है। जैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम हो तो हम बोलेंगे कि तुम ऐसे खाओ, ये आसन करो, ये मेडिसिन लो, तो वो बात मान जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो पागल होता है वो ना बात मानता है और ना वो मेडिसिन खाता है, लेकिन हमको आखिर ठीक करना है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि वो ठीक हो सके, चाहे वो हिप्नोटिज्म हो चाहे जो भी हो, मुझे उसको ठीक करना है। Dada Vijay Dada is from Muzaffarpur. He is asking a question that for a sane person, for a person who is of all right mental capacity, Mhm. it's easy to tell him the diet, the medicines, and what kind of lifestyle he should follow. But what for someone who is mentally challenged or mentally unwell, it is very difficult because they won't follow it or they won't rely on the information or something like that, would do something weird about it. So, is there any solution regarding that? Acha, Vijay, it is a problem that every doctor faces and every person faces. With my training and teaching, one of the golden rules, okay, is one, do not treat your own family or get someone else to treat your family because we are emotionally involved with our family. No? We cannot be logical and dispassionate. So can Vijay understand my English or no? You have to translate. I'll translate for him. Okay, Please go ahead. start with that. Fascinating. दादा दादा बोल रहे हैं कि सबसे पहला बात गोल्डन रूल तो ये है कि मतलब सारे डॉक्टर्स के सामने ये चैलेंज आता है। तो जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं या आपके करीबी लोग हैं, उसका ट्रीटमेंट आप खुद से नहीं करेंगे क्योंकि आपका बात को वो मानेंगे नहीं। ठीक है, जैसे वो होता है ना कि एक कहावत भी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला वो हिसाब बैठता है, तो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो डॉक्टर्स भी अपना खुद का घर के लोग का इलाज नहीं करते हैं क्योंकि उनका बात नहीं मानेंगे या सीरियसली नहीं लेंगे उनको। हमेशा एक थर्ड व्यक्ति जो उसको आ, मतलब बिना बायस के देख सके उस पेशेंट को, वो Uh, हमेशा कारगर रहता है। जी दादा। mhm. And Vijay, the second golden rule we have as a doctor is do not force advice or a help on someone who doesn't ask. So, Dio, I'll break this down into small things. So, the second rule is not to force ourselves upon people who don't ask for our help. It always ends up badly. So, say that one, please, Dio. कह रहे हैं कि दूसरा जो रूल बता रहे हैं। आपको दूसरा रूल अगर नहीं बता। कहता ना कोई कि हाँ भी मुझे बताओ, तो आपने जबरदस्ती अपनी बात उनको नहीं कहनी है कि ऐसे करो ऐसे करो, Dhanyavad. जबरदस्ती। या So now let's move to your question. Now, with someone who has an emotional imbalance or a mental imbalance, there can be medical reasons why this is occurring. Let's say there is a very common link between the kidneys and poor function of the kidneys and poor thinking. Now, there is dementia. Now, there is various forms of dementia. So we can treat the mental condition if we understand the pathology. Is that? वो कह रहे हैं कि किडनी फंक्शन और मेंटल कंडीशन का डायरेक्टली रिलेशन है।
कि मेंटल कंडीशन अगर किसी की पुअर है तो उनका जो है हम पैथोलॉजी से किडनी का फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया दादा ने, कि किडनी फंक्शंस जो हैं अगर उसमें वो पुअर हो गया, कोई इश्यूज हैं, तो मेंटल कंडीशन भी जो है वो पुअर हो सकती है। तो पैथोलॉजी से KFT वगैरह टेस्ट करा के उनका जो है जस्ट उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाया जा सकता है। यस प्लीज। So, Vijay, if the person is physically, medically fine, but they're still not willing to change, then you have to decide whether this is their destiny, this is their fate. It is very hard to change someone who has decided that they will not listen to you. Yeah. दादा बोल रहे हैं कि आपको उनका ही मदद करना है जो मदद के लिए आपके पास आ रहे हैं। जैसे कुआं चल के नहीं जाता है इंसान के पास, इंसान को चल के जाना होता है कुआं के पास। तो अगर उसमें कोई इच्छा नहीं है आपका मदद मांगने का या आपसे मदद लेने का, तो अपने आप को फोर्स नहीं करना आपको कि आप मेरा मदद ले ही लो। अगर उनका दिमागी हालत और शारीरिक हालत ठीक है तो। अगर वो एक मेंटल पेशेंट है तो आपका तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, जो दादा बताएंगे अभी। जी So, दादा। Vijay, to go further, I will have to understand who and what you are talking about, but that might be too personal for you. So, विजय, दादा वो बोल कह रहे रहे हैं हैं कि आप कि बताओ उनको कि मतलब कि वो कौन है। अगर आप बताना चाहो तो वो हो सकता है आपके लिए वो बहुत पर्सनल भी हो, लेकिन थोड़ा और वो क्लियर कर पाएंगे अगर आप बताते हैं कि वो कौन है और क्या कंडीशन है उनकी। विजय। Dada, Dada, I have a question, Dada. Hello. जी राजा, जी राजा। Light on के please light it. Dada, एक light on कीजिए। विजय बोलिए। जी मैं क्वेश्चन समझा नहीं, नेट चला गया था। वो कह रहे हैं कि आपके क्वेश्चन को और क्लैरिफाई वो कर देंगे अगर आप थोड़ा सा कंडीशन उनकी बता दें और वो कौन है। तो पर्सनल भी हो सकता है, अगर नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं, बट वो कहते हैं कि क्या चलो कंडीशन है कि क्या करते हैं, कुछ उनके दादा, सिम्टम्स के बताएंगे तो हेल्प अजय हो वाला सकती दादा। हेलो दादा, सॉरी इंटरप्शन के लिए। दादा, मैं जो मेरा बेटा है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफर्ड है। हेलो। है। हाँ हाँ हाँ। दादा बोल। अच्छा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए कुछ ऐसा नेचुरोपैथी कोई सिस्टम होगा तो कुछ गाइड कर सकते हैं? दादा, he is बट asking that his son is suffering from an autism syndrome. So is there any solution for that? normally, we have to think about with the autism and a spectrum disorder, autism is increasing globally now, where before it was a very rare disease, a very strange, it wasn't common. So, Shashi Ranjan, the default is coming back. So one of the things that we're finding a great deal of benefit from is looking at the diet. Definitely things such as sugars, very refined carbohydrates, refined foods. We find that we have improvement in many of these children with this condition. Yeah. Keeping in mind that there are many different types. So that's the first one. Dale. जी दादा। तो दादा बोल रहे हैं कि ऑटिज्म का बहुत सारा प्रकार होता है, तो एग्जैक्ट उस प्रकार को देखना होगा, लेकिन आपको उनके खान पान में जो रिफाइंड शुगर हो गया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, ये सब आपको अवॉइड करना है। भला दादा, मैं थोड़ा सा नेटवर्क जा रहा, आप देखें थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है हम मिस करेंगे बीच बीच में चीज़ को। हाँ नहीं, वो यही कह रहे हैं कि जो सबसे पहला है, पहला जो पॉइंट है वो इसमें कहते हैं पहली बात तो ये केसेस जो है पहले नहीं थे, अब बहुत कॉमन हो रहे हैं ऑटिज्म के इस चीज़ के। तो उसके जो वाइट जो शुगर है और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक है उसको मिनिमम कर देना है। कम करना है। Hmm. ये हाँ, सर। तुमने कम या कर रखा है।
The second is the giving, detoxifying the body. We have, of course, the mother and father are components or aspects of this disorder that we have to take into account as well. So let's say a man works most of his life in a factory, now, surrounded by chemicals. He will pass that on to his children. Now, so we have to look at the genetic makeup of the family as well. So that is something that we can address by detoxification. But we will reach a point with that where we will have much more long-term therapy to try and address the issue. दादा बोल रहे हैं कि ये आपका जेनेटिक मेकअप के कारण भी हो सकता है, क्योंकि अंत में बच्चा वही बनता है जो क्रोमोसोम्स पास होता है माता और पिता के द्वारा। तो उनके द्वारा ही एक नए जीवन का मतलब दिया जाता है। तो उनका डीएनए अलाइंड होता है, तो हो सकता है कि वो जेनेटिक है, डीएनए के थ्रू आया है। लेकिन अब उसको क्योर करने का जब बात किया जा रहा है तो डिटॉक्सिफिकेशन पे हम जा सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन में जनरली आपका शरीर की जो गंदगी है उससे उसको निकाला जाता है, ऐसे कि हम पानी, उदर स्नान वगैरह कराते हैं, हम अल्कलाइन भोजन देते हैं, बिल्कुल एसिडिक भोजन को बंद करते हैं, और बस फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस पे रखते हैं बच्चे को। तो डाइट से ही बहुत सारा चीज़ का क्योर हो सकता है, लेकिन उसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी है जो दादा भी बताएंगे। जी दादा। Now, there's new research coming out, and this is very old. This is very ancient drugs that have been banned and kept from us because of political or social fear. Now, we're finding that psilocybin, which is from a mushroom, has the ability to grow new neurons. It's called neurogenic. So it can grow actually new branches within the brain. It also reduces various areas of the brain, like the amygdala, heightens other ones. So definitely having a look at these new drugs that we have been, cultures have been taking for centuries, but recently in the last 40 years, we haven't been able to access them. So we find for things like depression, autism, even paralysis, especially the psilocybin from the mushroom, is having dramatic improvement with these people. But at this point in time, that drug is still illegal. So I cannot advise you to take it. I can only tell you what the research is saying. So दादा बोल रहे हैं you can advise Dada to take as much as mushroom one can. I am currently going for my qualifications to be what we call a practitioner or a therapist in this area. So I have to go back to university again and study for another 4 years so I can do this. But definitely in East Asia, it's much easier to get these. But normally, what I would do is a micro dose. Let's say 500 milligrams, depending on the boy's weight. I would be doing about 500, maybe 300 to 500 milligrams per day, microdosing. So yes. एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि मशरूम दादा में बोल रहे हैं कि एक मशरूम होता है साइलस 7 करके, बोलो बोलो निरुपम बोलिए। हाँ एक मशरूम होता है साइलस 7 उसका नाम है। ऑल्दो उसका रोल अभी तक इलीगल बताया गया है, लेकिन उसमें उसका रिसर्च करने पे पाया गया है कि उससे नए न्यूरॉन्स ग्रो करते हैं। तो जो न्यूरॉन्स आपके डैमेज हो चुके हैं, जो मानसिक बीमारियां में होती हैं, डिप्रेशन हो गया, ऑटिज्म हो गया, इवन पैरालिसिस में जहाँ पे बॉडी का आधा सेल जो होता है न्यूरॉन होता मर जाता है,
उसको रिस्टोर करने का कैपेबिलिटी होता है। तो अगर उसका एक माइक्रो डोज दिया जाए, यानी कि बच्चे का वेट के हिसाब से 300 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक, और हर दिन थोड़ा थोड़ा सेवन कराया जाए, तो हो सकता है कि नया जो न्यूरॉन ग्रो करेगा वो पुराने वाले को ओवरलैप कर लेगा, पुराने वाले को हटा के रिप्लेस करके नया न्यूरॉन डालेगा वहाँ पे। लेकिन अभी भी ये चीज़ इलीगल है, तो इसको पूरी तरह से मतलब वो देखना नहीं होगा नहीं, कि मतलब यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, तो उसके वो हिसाब कह से रहे हैं उसको लेना ड्रग होगा। ड्रग अभी अभी तक पूरी तरह से सैंक्शन नहीं हुई है, बट ये जो मशरूम्स वगैरह वो ली जा सकती हैं, इतनी क्वांटिटी दी जा सकती है। The other thing with the child, and any child or any adult going through a spectrum disorder, is to learn how to communicate with them, because they do not know how to communicate properly with you. They can't. They have an impairment, so their brain is interpreting the world in a different way than what we see the world. So learning how they communicate will allow you to bridge, instead of forcing them to act like us, instead of making them try and act like us, we should actually try and modify us to fit them and lead them out from where they are. दादा बोल रहे हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें जनरली हम पुश करते हैं कि बच्चा जो है उसको हमारी तरह फंक्शन करना चाहिए, उसको हमारी तरह कम्युनिकेट करना आना चाहिए, या हमारी तरह उसको सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके लिए उतना मुश्किल नहीं रहेगा उसके लेवल पे जाके उसको समझने का। तो आप उससे कम्युनिकेट करना सीखिए, आप उससे बातचीत करना सीखिए, उसको अपना बात कन्वे करने दीजिए। उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाइए कि वो आपके साथ सहज महसूस करे अपने आप को एक्सप्रेस करने में। जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करना सीख लेंगे तो दोनों का लाइफ इजी हो जाएगा। वो अपने आप को खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, एटलीस्ट आपके सामने कर पाएगा। और वहाँ से कुछ गुंजाइश है कि वहाँ से कुछ उसके लिए बेहतर किया जा सके। क्योंकि अगर हम उसको अपनी दुनिया में फोर्स करने का कोशिश करेंगे कि नहीं तुम सबके जैसा तुम बनने का कोशिश करो, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, उसको और स्ट्रेस में डालेगा और उसके लिए और हानिकारक हो जाएगा। जी दादा। यस। Next. May I ask question? Yes, हाँ, Rakesh. Is it completed? I believe so. My two questions. One question for my 14-year young daughter. Her hair is becoming white in this age. And second question, what is the solution for fatty liver? Fatty liver. Yeah. Okay, so the body. So let's just have a chat about your daughter. You know, your daughter is a vegetarian. Yeah, they are all Margis. They don't even Oh yeah, eat we are Margi onion and garlic. Okay. vegetarian. It's completely So separate food. one of the compounds that is essential for hair color and hair growth is selenium. Okay, a trace mineral, selenium. So if she is deficient in selenium, she will actually start going white. But is naturally with age, we have other aspects going on, per se, me. The other, if it is only in one area, Rakesh, only in one part of the scalp, or is it all over? All over, all over. Okay. Now let me ask you, is your 14-year-old daughter, does she act much older than what she is? No. Eh, No? Uh, She's a normal little girl? no. I think her hair is around 40, 60, 70 pieces only become white and Ah. becoming white. Hmm. And So she is normally, okay. healthy, all fine. Okay. So looking at definitely zinc, selenium, these two minerals, okay, zinc and selenium, okay.
and making sure that she has enough copper. So yes, with the pigmentation of the hair, we're also looking at the pituitary gland and the thyroid gland. No. So we'd have to look at those. Now, first of all, look at her supplementation. If she's having supplements, I don't think a 14-year-old girl needs supplements or should need supplements, but in the case of your daughter, you might want to consider doing some supplements for a while, especially with selenium and zinc and going on that. With your fatty liver, Rakesh, the fatty liver, we have an interesting thing where we have skinny fat, where in the Western hemisphere, in the Western societies, we have obesity, which is, we can see it. We can see fat people or overweight people. Then with skinny fat, as you are pointing out, the thing is that we have skinny people that are actually suffering from fatty liver. One of the ways of rebalancing the liver, which is one of the most powerful therapies for the human body, is fasting. Yeah. Now, I can tell you the herbs to take. There's dandelion. We can take milk thistle, silmarium. So definitely for liver function and health, you can take these two herbs, dandelion and milk thistle. Yeah. So these are the two herbs that you should be looking for. But if you wish to reverse the fatty liver very, very quickly, you'd be looking at doing a 3 to 5 day water fast only. No. And this would actually reverse your fatty liver and help balance it. Per se, next week I will be starting for myself a 10-day water only fast. No. So this is the most powerful way to reset the human body. And I would say not intermittent fasting, because intermittent, not eating for certain many hours in the day and doing this for a long period of time, what you end up doing is you start to rob your body of protein, which is essential and even more important in the vegetarian diet. So soybeans are very high in protein. We have other vegetarian sources. But because you're not entering into a stage of ketosis in this intermittent fasting, you will delete or deplete yourself of protein. So I only recommend water fasting, and I only recommend that you do it for a minimum of 3 days. And if you can, 5 days is better, 10 days is even a complete reset. So, yeah. दादा बोल रहे Thank you हैं so much, कि Dada. I will try. Please do some. I can send you all a wonderful cardiologist in America. He's free. He speaks about this at length, and he wishes I could find his name. But yes, wonderful man from India who's now a cardiologist in America, and he's saving countless people's lives by promoting fasting to avoid heart surgery. So yes. दादा बोल रहे हैं कि जो बाल का ये होता है, मतलब डिकलरेशन होता है, उसमें वाइटिश हो जाता है, वो मेनली जिंक और सेलेनियम की कमी से होता है। तो सप्लीमेंट्स अगर ले सकते हैं आप, ऊपर से कुछ आप केमिकल ले सकते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं, तो वो बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन 14 साल की बच्ची पे उसका असर करना है नहीं नहीं करना है, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा कि वो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फैटी लिवर के लिए दादा बोलते हैं कि, और दो हर्ब का भी नाम बताए थे, एक डैंडीलायन का आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा मुझे सुनाई नहीं दिया था अच्छे से। फिर एक फैटी लिवर के लिए दादा बोलते हैं कि कंप्लीट कीटोसिस पे जाना है, जिसमें पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं, मतलब जो 12 घंटा का फास्टिंग होता है वो नहीं करना है। कम से कम 3 दिन का फास्टिंग करना है और पानी के साथ करना है। जिससे क्या होगा, जो जनरली फैटी लिवर उनको होता है जिनका स्किनी फैट वगैरह का बीमारी होता है। स्किनी फैट इंडिया में बहुत मिलता है, जहाँ पे बॉडी तो थिन होता है, लीन होता है, लेकिन पेट निकला रहता है, तो वो स्किनी फैट का हालत होता है।
तो कंप्लीट उसका 3 से 5 दिन का फास्टिंग पे जाए बस पानी के साथ, या 10 दिन पे भी जा सकता है अगर आपका कैपेसिटी है तो उसमें वो सारा फैट जो होता है पेट का वो बर्न हो जाता है और इंसान सामान्य स्थिति में आ जाता है। जी ललित कुमार दीदी, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो आप हाँ बोल नहीं, सकते एक हैं। मिनट, एक और दादा ने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है पॉल ने, कि एक इंडियन हार्ट सर्जन है वहाँ पर यूएसए में, Pradip एक, Jamnadas. His name is pardon? Pradip. His name is Dr. Pradip Jamnadas. ओके, प्रदीप Hmm. जमनादास, और वो कह रहे हैं कि फास्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को, हार्ट सर्जरी अवॉइड हो रही है उससे। यानी कि जो फास्टिंग कर रहे हैं, हार्ट सर्जन यानी उनको हार्ट सर्जरी प्रिस्क्राइब की गई थी कि करना है हार्ट सर्जरी, लेकिन फास्टिंग कर करके फास्टिंग कर करके उन्होंने कईयों की हार्ट सर्जरी से रिवर्ट करवाया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए, मैं इसलिए बीच में जी पॉइंट कर रहा हूँ, एवरीबडी शुड गो फॉर दैट फास्टिंग जो हमें करवाई गई है। आज भी हम फास्टिंग में कल से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी फ्रेश हैं बाबा की कृपा से। एवरीबडी शुड डू, या जी Yes. जी यस। जी। उमान दादा, आप अपना सवाल ओमान, पूछिए, ओमान, यू आपको मे क्या। आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, नमस्कार ये सभी को and hello आप Paul. Hello. बोलिए। Um, myself I'm Oman from and I'm from Bhutan and No. thank you so much for your insightful session on health and well-being. Well, Mhm. what I observed was that most of the session covered more sort of what parts, I mean, how to what we need to do to stay healthy, right? Ah. For example, you said that we need to have balance between mind and body, Ah. and it should be us who should dictate to our mind, and it is not the mind that should dictate to us. But I wanted to know, how can we achieve that? For example, if I want to have balance between mind and body, how can make that? Of course, we do meditation, we do prayer, and all sort of things. But is there any specific technique that you follow for your patients, so that we can have that balance between mind and body? That is one question. And another one is, since I'm a teacher here, this is quite personalized. I'm a teacher here in Bhutan Baccalaureate School. And what Bhutan Baccalaureate School means, just like we encountered one question regarding autism. So here we have a lot of bundle of students who are suffering from different mental diseases. So as a tutor, what should be my role to guide them? How should I go about with it? So that is another question. Right. One is let's deal with your first question. So the mind body connection. So let's first of all, as a teacher, you understand how powerful words are. Yeah? And words become they get a life of their own. Okay, and we don't think about them so much. Yeah. Now, with your gurus and with your teachers in the Ananda Marga and elsewhere, it is the understanding of reality and understanding of why we are here. So, one is service to others, right? So this gives us purpose. Yeah. But really, the primary goal is to pass through this world without upsetting the wheel. Okay, so we can move on. Now, I come back to the mind. The mind is a computer. Yeah. If we think about it as a physical thing, the mind is a computer. It has neurons. It has a neural network. It is like a data center. It has memory. It has reflexes. It has learned experience. Yeah. The conscious sits above this. Yeah. So this is an argument being going on for centuries. Now, recently in the US, a wonderful doctor in the US is leading. He's the leading cardiac resuscitation surgeon in the US. And what they're finding, and this has profound impact upon how we live our lives, they are finding that after the moment of clinical death, both heart, breathing, pulmonary, and brain, yeah, they can bring a person back to life after an hour or more.
with full memory function, full brain function. Yeah. Which then begs the question, where did that person go? Yeah. They disappeared for over an hour. Their body was dead. They weren't connected to their body, but then they were brought back into their body. So we have a mind-body connection or a conscious body connection. Yeah. So when we say, how do I control my body? Understand that your body is a tool, is a vehicle for your consciousness. Your mind is just the processing unit. Yeah. So as we understand the basic understanding, this is what I like to do. I like to bring everything down to the simplest possible um, solution, because then if I can do that, then I have a better understanding and better control over my environment and my actions. So my body is a vehicle, therefore my body is a tool, therefore my body is like my car, and therefore I can fix my car. Or I can find someone to fix my car. Yeah. But my car doesn't drive me, I drive my car. Do you understand the philosophy here? Yeah. It is not giving power to your body. The power stays in your conscious mind. It is not, oh, my body hurts today. No, it is, why does my body hurt and how do I fix it? Not the other way around. My body is telling me I can't move because I hurt. No, that is just a signal. That is just a message from your body to your mind. So that is one of the fundamental things for actually taking control of your physical body. Yeah, it's that under that philosophy. With that in mind, I know many cases where people have been in very bad car accidents, very bad, yeah, all sorts of different accidents, and have been told that they will never walk again. Well, they have been told by the doctors. Yeah. And they have refused to accept. Some people accept and never walk again. Some do not accept, right? And then over time, they get back their mobility, they get back their legs. Now, the question is, which one would you rather be? Would you rather be the one that just accepts, or would you rather be the one who has the power in your life to control and change your life? This is not to say you might be successful in getting back your function, but you might get it back in a different way. Equally as good, better than the other. As for your children, we have to look at this new rise, and there are a lot of people that associate autism with the new vaccine programs. There is some linkages to it. The primary linkage, however, is to diet and also mineral deficiencies. You can one of the aspects, because in my family I have had mentally handicapped members of my family all my life, and they live very, very happy lives if we stop trying to make them ourselves. Yeah. So if we allow them to live their life, like I allow you to live your life the way you want, I don't want you to change your life to make me happy. But it seems to be that we wish to make these people act like us, but they are just individuals. And we notice that they are very different from us. So this is why we focus on them and we recognize them. Years ago, Down syndrome, okay, was a shameful life sentence. Yeah. But now we're finding that children with Down syndrome, if we allow them to be who they are, lead perfectly happy and normal lives. So it is a complex question, Aman, and I think that both of them have deep, ongoing conversations that we could have for many, many hours. But that would be how I treat my special people. I allow them to be who they are. I want them to be happy. So I help them to be happy, not like me.
Okay, Paul. Also, you said that there is problem between Western diet as well as the diet for vegetarian as well. So how can we address this issue for vegetarian especially? Ah, so understanding nutrition now, protein in a vegetarian diet is difficult to get. In a carnivore diet, of course, it's there all the time. But the carnivore diet has its own problems, apart from the spiritual and the philosophical aspects. So you can get there are very high sources of protein in the vegetarian world. Now, with you, Oman, how heavy are you? Do you know your kilo body weight? Yeah, I'm 62 kg. Okay, so you should have minimum 62 grams of protein per day. Yeah, minimum to maintain your health. Yeah. So if you're not getting 62 grams per day, your body will start to decay over time. So protein is used not only in muscle, it's used in nerve function, it's used in digestion, it's used in repair, tissue repair, it's used in blood vessel strength, it's used in all aspects because the protein is a building block for everything, for your fluid in your joints. Yeah. So we need this for your collagen. We need protein. So yes, this is the one of the major aspects, and there are a few others. When you take your food source from the depleted soil, yeah, then you are going to have a deficiency. Now, I can tell you in all of North America, selenium is deficient in all the soil in North America. Yeah. So everyone over there has a selenium deficiency. It's very easy to point this out. So the thing is that definitely protein and iron in the vegetarian diet, but also knowing your food is coming from healthy soil. Yeah, very important. Okay. Okay, thank you, तो मैं दो Paul. तीन Thank you, तीन Paul. तीन लोग हैं, ललित, नीलम दीदी, देन तीर्था दीदी, पहले देन जो तन्मय. जो बोले हैं दादा, जो बोले हैं उसको ट्रांसलेट कीजिए ताकि जी 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 बाकी जी लोग को दीदी भी अवगत हाँ हो। हाँ, निरुपम बोल दो. हाँ तो दो तीन चीज दादा बोले हैं। पहला तो ये है कि मतलब शरीर जो है वो एक गाड़ी, एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है। और इसमें क्या होता है कि गाड़ी जो है उसको हम लोग को चलाना चाहिए। गाड़ी जैसे था ना, एक एग्जाम्पल था कि घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा अगर रहेगा तो हम लोग को सीधा गर्त में लेके जाएगा, हम लोग को गड्ढे के दादा अंदर तीर्था का ना ड्यूटी में लेट हो रहा है, थोड़ा इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ओके. जी जी दे देंगे, एक सेकंड पहले खत्म कर लेते हैं ना। तो उस गाड़ी को कंट्रोल करना है, शरीर को कंट्रोल करना है हमको, और मन के द्वारा उसको संचालित करना है। शरीर को नहीं संचालित करने देना है मन को। शरीर में अगर कुछ गड़बड़ आ रहा है तो उसको सल्यूशन ढूंढना है कि कहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, उसको कैसे ठीक करना है, ताकि शरीर जो है वो काम कर सके, जैसा मन चाहता है उस तरह से काम कर सके, रादर देन शरीर को जैसा वो चल रहा है वैसा ही काम करने दें। दूसरा बात बोलते हैं दादा, ऑटिज्म से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें बोलते किसी भी तरह का मानसिक रोग हो। पहले डाउन सिंड्रोम को बहुत नीची स्तर से देखा जाता था कि क्या हो गया है, कैसे हो गया है, लेकिन उस इंसान को इंसान की तरह जीने देना चाहिए। अपना जो भी आपका सोच है, आपका ओपिनियन है, आपका वर्ल्ड व्यू है, उसके ऊपर नहीं थोपना चाहिए कि तुम इस तरह से जियो, तुम मेरे तरह से सोचो, मेरे तरह से जियो, सबके जैसे तुम रहो, क्योंकि फंडामेंटली वो लोग अलग होते हैं। दे आर मेंटली चैलेंज, तो उनको थोड़ा सा उनको दिक्कत आएगा कोप अप करने के लिए, आपका दुनिया में फिट इन होने के लिए, तो वो फिट इन नहीं हो पाएंगे। अगर आप जबरदस्ती पुश करेंगे तो उनका सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, उनको अपना जीवन जीने दीजिए, बहुत ज्यादा उन पे फोर्स मत करिए अपने आप को, उनसे कम्युनिकेट करना सीखिए। जैसे दादा ने पहले बोला था, उनसे कम्युनिकेट करना सीखिए। वो चाहे दुनिया में सबको अपनी बातें नहीं बता पाए, लेकिन आपके साथ वो सहज होने चाहिए। तो जो भी टीचर हैं या पेरेंट्स हैं,
तो उनको इन बातों का ख्याल होना चाहिए कि अपना वर्ल्ड व्यू नहीं थोपें उस पे और उसको अपना लाइफ जीने दें, तो वो एक अच्छा, एक हंसी खुशी एक लाइफ अपना जी लेगा। और एक और सवाल था इनका, मैं भूल रहा हूँ, तीसरा सवाल क्या था दादा? भला दादा थोड़ा सा इस पे बोल दीजिए। Okay, हाँ उन्हें पहले let Tirtha, you please go ahead with your question, then I will come to that. Tirtha. सभी को नमस्कार. Good morning, Dr. Paul. It's great Good morning. pleasure to Namaskar. have you. Namaskar. It's great pleasure to have you on this session today. And thank you so much for Thank giving you. all this advice, Doctor. Mm. My problem is I have a very severe dry eyes. Mhm. And then, yeah, I have been to the hospital here in Bhutan. I'm from Bhutan, Dr. Paul, first of all. I So would like to I visit went, one day. Mhm. thank you. Please, most welcome, Dada. Mhm. And my problem, like I have been here in Bhutan in the hospital, and they told me that I have got a very severe dry eyes. Mhm. And then they even told me to go through this surgery. So I did a small minor surgery where they told me that the eyes can be blocked and where the water can be absorbed. Then I did that, but still my eyes is having a same problem. Is what to say? It's very difficult to look into the sunlight and in the very bright light, and also having some itchiness, something like that. And they told me that the dry eyes can be causes with the various other diseases as well. And they did some investigation. After they did a few investigation, and they found out that I am going through the syndrome disease, which is like affecting an autoimmune system. Mhm. And then the advice from doctor was there, this cannot be cured totally, but I have to go through the eye drop every time, and also to control the junk food and something like that only. They said there is no such a diet that can cure this disease permanently. So what is the advice from doctor, and is there any permanent solution that it can be cured? Well, yeah, at the risk of being so I have to say one thing. There are many good doctors in the world, many, many good doctors. Yeah. Yes, And doctor. there are also many doctors who have stopped thinking. Mhm. So with the autoimmune disorder, it is curable. With dry eyes, Yes, it is curable. yeah, okay, doctor. Yeah. Okay. Nothing is non-curable. Okay. Death might be the one that we don't know about, but even in the Mahayana, Hinayana, death is just a gateway. So let's just talk about so you're probably lacking in vitamin D. No? Yes, they told me that as well, and I took some medicine for that for a month, No. actually, for 6 weeks. Did Vitamin you D take vitamin D or you took a medication? medication only, medication, the Ah, powder vitamin D. Yeah. no, 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 no. No. So, okay. So you need to be taking round about 10 to 20,000 international units. Huh? Now, the RDA is only 1,000 or less. Okay, So a therapeutic dose of vitamin D is round about 10 to 20,000 IUs. I take 10,000 every morning. Mhm. Right. So the doctors will tell you that vitamin D is dangerous, and it's not dangerous. Vitamin D is actually not a vitamin. It's a hormone. Okay. It's been lumped as a vitamin, but it actually does many different things in the body. And one of the interesting things it does is not only does it help with eyesight, and the same with vitamin A, but it also reduces inflammation systemically through the body. Huh? okay. So that is one of the things. So definitely. So again, I need to ask because the background of the question, you are also a vegetarian. Yes, sir. Yes, Yes, good. doctor. All right. So therefore, it's no use me recommending fish oil to you. No. So because you won't take it. So what we need to do is we need Okay, to actually increase your vitamin D up to around about 10,000 international units per day. okay,
we Yes. need to get you magnesium glycinate. Okay. There's different types of magnesium, and normally the one that you buy from the chemist shop or whatever is magnesium oxide or something similar. You do not absorb it. It is a waste of money. You need magnesium glycinate. So these two Okay. things will radically help your eyesight. Okay. Now, Thank you, doctor. well, I haven't finished. So, surgery should always be a last resort. Yeah, absolutely last resort. Because once we change physically the human body, we cannot, in most cases, undo this. Okay, so going through the tear ducts, etc., I don't think they would have done anything that you can't repair yourself. Yeah, but definitely with Yes. a bone fusion. Okay, when they remove a cartilage and they fuse bone, that is something that cannot be undone. Okay, so Yes, doctor. now, I regret a lot regarding that, because out of fear, the doctor told me that is a very severe thing. Severe, the dry eyes is very severe disease. Then they, out of fear, then I accepted doing the surgery. They said it's a minor surgery whereby the water need to be absorbed in the eyes. Then I immediately accepted that. So after doing also, when I find the problem is same, then I regret a lot by yes. doing the surgery as well. Let's understand that doctors are humans. They're men and women like us, and they are not perfect. So, but yes, this is where we get to the beginning of the talk that AJ sort of had me do, which is what is health? Health is require information. And this is now that I am retired, I'm very happy to do this because it keeps my little brain going. And I get to pass on the information. So with these things, definitely with the vitamin D, magnesium, you might need some potassium, definitely folate. So Thank you, doctor. my pleasure. But the thing is that yes, do your research. The doctors are wrong. Dry eyes never killed anyone. I did, doctor. I did. So Good. yes. Good. So it's a Well very, done. very pleasure that doctor here, and thank you, Ajit Dada, for organizing this session. So it's really useful. So mostly my solution is to take the vitamin D, right, doctor? With magnesium, you With take them together. magnesium. You take them Okay. together. Yeah. And over 10,000 units per day. You can take up to 30,000 units per day. Don't worry. Okay. Thank you. Yeah. Paul, Dada, in Okay. what Thank you form for can giving it? me. Okay. Sorry. Okay, so in what form it can be taken? In the form of medicine, tablets, or how? You are saying 10,000 to 30,000 Oh, international yes. Thank you. units. So how they can be taken? Taking vitamin D3 in a gelatin capsule. Okay. They're very soft. I take 10 every morning. Oh, So, but they're very small. They're very Okay. small. Thank you. Dada, Thank you. My Dada, apology, Didi Lalita. I took first. Thank you so much for giving me a chance. Yeah. Thank you. ओके जस्ट 2 मिनट के लिए मैं ना बता दूं कि क्या दीदी ने पूछा और क्या बताया है। बहुत ज़रूरी है बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि ड्राई आइज़ की ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और उससे पहले उन्होंने दादा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ओमान को भी बोला था कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन लेना ही लेना है। अगर किसी का वेट 60 केजी है तो 60 ग्राम प्रोटीन डेली लेना ही है। प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि मसल्स बनेंगे, प्रोटीन का मतलब है कि आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स और सारा का सारा सिस्टम को डेवलप करता है। इसलिए प्रोटीन जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन डेली लेना ही लेना है, नंबर 1। दूसरा जो है तीर्था दीदी ने जो बोला वहाँ पर कि ड्राई आइज की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन तक बोला गया है ये वो, तो उसके लिए बोला है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली दादा ने कि ऑटो इम्यून सिस्टम। परसों एक क्लास हुआ था, उसमें बताया था कि ऑटो इम्यून मीन्स कि हमारी इम्यूनिटी हमें ही मारने लग जाता है वो सिस्टम, इंस्टेड ऑफ सेविंग अस। तो बट दादा बता रहे हैं कि ऑटो इम्यून अगर डिजीज प्रॉब्लम आई हुई है तो दैट इज क्योरेबल। ठीक है। दूसरा
ड्राई आइज के लिए 3-4 चीज़ें बोली हैं करने के लिए। नंबर 1 तो सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन, वो तो शुरू से कह रहे हैं। दूसरा विटामिन डी एटलीस्ट 10,000 यूनिट्स, जो कि जिलेटिन कैप्सूल की फॉर्म में लिए जा सकते हैं, मिनिमम 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विद मैग्नीशियम लाइसिएट, ये लेना बहुत ज़रूरी है। और इससे जो है आइज़ की जो प्रॉब्लम है वो जो है रिकवर होनी शुरू हो जाएगी और ठीक होना शुरू हो जाएगा। दैट कैन बी विटामिन डी एंड मैग्नीशियम लाइसिएट, ये दोनों चीज़ें जो हैं। एंड सम पोटेशियम आल्सो यू टोल्ड पॉल, पोटेशियम Potassium folate. potassium folate. Potassium, yes. Yeah, Yeah, okay. exactly. So mainly he is saying कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर ओल्ड एज में जाके आगे वो अराइज होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ सम विटामिन्स एंड ऑल, और उनका अगर पूरा हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। इवन जो छोटी बिटिया थी 14 साल की, जिसको जो है फैटी लीवर है या हेयर वाइट हो रहे हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने कहा कि उनको सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। नॉर्मली इंडिया में बहुत कम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं साथ में बहुत ओल्ड एज ले, बट ज़रूरी हैं, उससे सप्लीमेंट से विटामिन और मिनरल्स की पूरी हो जाएगा तो हेल्पफुल होंगे। ओके, निरुपम यू कैन टेक नेक्स्ट। ललित, हाँ नीलम दीदी, ललित कुमार दीदी, आप अपना सवाल पूछ। नीलम दीदी हैं, ललित कुमार के नाम से जुड़ी हैं। नमस्कार दादा, नीलम ललित कुमार के इसमें आए। बोलिए दीदी, बोलिए। को नमस्कार दादा। मेरा ये एक प्रश्न है दादा कि 15 महीने का बच्चे है छोटा, उसका जो है चेहरे पे चाय गिर गया, जिससे क्या हुआ ना, ये पूरा चेहरा खराब हो गया है, पूरा इससे चेहरा एकदम चमड़ा निकल गया है। उसके लिए कोई उपाय है दादा नेचुरोथेरेपी में, कुछ ऐसा दादा, में? Yeah, she's asking that there's a 15-month-old baby and some chai. It's a Indian drink, an Indian beverage, a hot drink hot tea which has fallen on her face and has completely burnt her forehead and the parts of her cheeks and stuff. So, is there any solution regarding that? Can something be done regarding that? Yes, definitely. Ajay. So I'm terribly sorry to hear about the accident. Okay, now, one of the very powerful, very simple things to make is ascorbic acid into a paste. Okay, so we're going to combine basically. We need to have a mixture of melted beeswax in a little bit of oil, usually avocado oil or a olive oil, but usually avocado oil would be good, or another high grade oil. And as that sets, as you put the beeswax and the oil together, you mix in the ascorbic acid powder. Okay, so this is the first one. Deal? And these three things should be applied on the affected area. Yes, Ajay. कि पहला solution आपका ये है कि वो Can I speak, दादा? तो पहला सोल्यूशन ये है इसका कि बी वैक्स, यानी कि जो आपका मधुमक्खी का छत्ता से उसका वैक्स निकलता है, उसमें एवोकाडो ऑयल या फिर आप एवोकाडो ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल को ऐड करिए। उसमें अस्कॉर्बिक एसिड का पाउडर आता है, उसको मिला लीजिए, उसको अप्लाई करने से वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, यस दादा, प्लीज कंटिन्यू। So please tell Lalit that the last time I made this preparation, so you melt the wax and you pour it into the warm oil, and as it's solidifying, you're mixing in your powder. Okay. I used it with a young woman, 28 years of age, who had been scarred because someone had pushed a bottle into her face when she was 16. So the scars had been there for over 11 years. Her scars started to disappear within 2 weeks of using simply ascorbic acid. दादा बोल रहे हैं कि
ये बी वैक्स जो है आपका हनी का ये होता है, उसको आपको पहले मेल्ट करना है। जब वो मेल्ट हो रहा है तो उसमें गरम आपका मतलब पूरा खौलता हुआ नहीं, गरम ऑयल को, एवोकाडो ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल को ऐड करना है। उसमें आपको अस्कॉर्बिक एसिड को ऐड करना है। दादा का ये प्रोवन टेस्टेड ये मेथड है। उनके पास एक 28 साल की लड़की आई थी, उसके मुंह पे एसिड अटैक हुआ था और 11 साल से उस पे परेशान थी, कोई सल्यूशन नहीं मिला था। ये लगाने के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनका जितना वो दाग था वो सबका सब चला गया। तो इसको आप एक बार करके देखिए, आपको राहत मिलेगा। Mhm. जी दादा। Second, एसिड का नाम फिर से बोलिएगा दादा, निरुपम दादा, एसिड का नाम। एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC। दादा दादा अभी 5 ही दिन हुआ है, कहीं कहीं गहरा घाव है और कहीं पूरा शरीर पूरा चेहरे खराब है, कहीं कहीं गहरा घाव है। ये दादा दादा ने जो बताया दीदी, आप करके देखिए उस चीज को ना, यानी मात्रा प्लीज प्लीज उसका मात्रा बता। Dada, how much amount of ascorbic acid and how much amount of everything should be taken? The bee wax, the avocado oil, and the ascorbic acid. normally I use one, so I am old. I swap between systems. I use roughly about 1 ounce of beeswax and around about 1 cup of oil, and I'll mix in between 10 to 20 grams of ascorbic acid powder. That will make 1 cup, just over 1.5 cups. So that should last you for a year or more than enough. नो दादा बोल रहे हैं आधा कि कप 1 वैक्स, ounce, हाँ ले लो। आधा आधा कप ये बी वैक्स, 1 कप आपका ऑयल लेना है और उसमें 10 से 20 ग्राम ascorbic एसिड को डाल के मिलाने से ये सोल्यूशन तैयार होता है। सुमन दीदी, नहीं, one दादा, पूछना था sorry, कुछ? one question is from my side. You have just अनम्यूट received कर on लीजिए, my पूछिए। Paul. These days, younger generation is taking so much protein, inclined towards protein supplements and big boxes and like that. They are so popular in market. Then, what will be repercussion? Are they okay, or means what's your comment about that? So many people are, especially youngsters, they are taking too much protein these days. Yes, AJ, can I get to that one? But I haven't finished with Lalit. So Yeah, Lalit, please go Yeah, ahead. please. Sorry. Lalit needs to get one herb now. One herb which is called comfrey, COMFREY. Its Latin name is Symphytum. It has human Symphytum officinale. It has the precursor for human growth hormone, and it will grow back the tissue genetically true. That herb is very important with the ascorbic acid. दादा एक प्लांट भी लेने का सजेशन दे रहे हैं। प्लांट का नाम है कॉम्फ्री, आप कहीं पे लिख लीजिए, COMFREY। और इसमें इसका खासियत यह है कि ये सेल्स को रीजनरेट करता है, जो जल चुका है उसको रिप्लेस करेगा और नया सेल वहाँ पे बहुत जल्दी उगेगा। जो हार्म हुआ है बच्चे के शक्ल पे उसको तुरंत रिप्लेस कर देगा। तो आप इसको आपको करना चाहिए, बिल्कुल दादा बोल रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको करिएगा तो जल्दी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जल्दी से वो ठीक हो जाएगा। नीलम सिम्फाटा दीदी, को आप ढंग से डॉक्टर के पास गई हो होम्योपैथिक वैसे? मेडिसिन है जो मार्केट में मिलता है। नीलम जी दीदी, आप डॉक्टर दादा के पास जी। गई हो ना? ही एक्सप्लेन अबाउट द सिम्फाटम। ना सिम्फाटम जो है होम्योपैथिक ड्रग है, वो मिल जाता है इजीली। सिंपैथिक ड्रग जो है ना, वो मेरे पास तो है, मुझे पता है वो। और लेकिन ये है, वही चीज है कि कुछ और है, नहीं पता दादा। लेकिन सिम्पैथम मेरे पास है, मेरे हाँ, तब वही है उसका, इसका है। उसका क्या वही इस्तेमाल दवाई, करिए। सिम्फैट क्या वही दवाई, हाँ वही दवाई है? जी सिम्फैटम ही है। वो उसका क्या, उसका पावर भी होता है, क्यों होता है,
30 होता है, 200 होता है, उसका पावर भी होता है दादा। Dada, what power should be given of this symphatum plant? Potential is. What power should be given of this plant? How much quantity should be given of this herb you have given? Normally I use it as an extract. I make the medicine myself. But if you can get the fresh root, very similar to how you use aloe vera. So you break the root and it has mucilage in it, and you can just rub the root on the wound. In clinical trials, you have to be careful because in clinical trials, it heals a wound 3 times faster than normal, right? Because of the alkaloid in the plant. So it stimulates tissue repair very quickly. So if you put it on too strong and you have an infection, the skin will seal over the infection. But with your baby, and obviously this is not an issue, but if you're using it on a wound or you're using it on broken skin, then yes, you have to be careful of infection. But you can use the fresh root or you can get the herbal extract from the root. Dada is saying the extract means Q power दे दी. हाँ दादा, आई एम ऑल्सो एग्री कि ये क्यू जो है ना वो एक्सटर्नल यूज के लिए ओनली क्यू इज एप्लीकेबल, मदर टिंचर। जी, दादा बोल रहे हैं कि बच्चा जो है उसके शक्ल पे बहुत ज़्यादा पावर का ये अप्लाई नहीं करना है। आपको अगर उसका पौधा मिल रहा है तो उसका जड़ से उसका जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है उसको डायरेक्टली निकाल के इस्तेमाल करिए। और अगर आपको इस्तेमाल करना है वो होम्योपैथी का जो वेरिएंट आता है तो सबसे कम पावर वाला जो है उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत तेज होता है और बच्चा बहुत छोटा है, स्किन सेंसिटिव है, उसका इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो कम से कम पावर का यूज़ करिएगा। आइडियल यही है कि आप प्लांट को लाइए और प्लांट का रूट का एक्सट्रैक्ट को निकालिए और उसको लगाइए, डायरेक्टली उसको लगाइए। प्लांट नहीं मिलेगा दादा सिम्फाइटम का, यहाँ होता नहीं है। मदर टिंचर ही यूज होगा, कम मात्रा में होगा और एक्सटर्नली मदर टिंचर ही यूज होता है। जी पावर का कॉन्सेप्ट होम्योपैथी के लिए इंटरनली है, एक्सटर्नल यूज करना है तो ओनली मदर टिंचर और आयुर्वेद मेडिसिन की तरह। Mother tincture itself is extract from roots. हाँ, ठीक है। जी दादा, नमस्कार दादा, धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, थैंक यू। सुमन दीदी, आपको कुछ बोलना है क्या? आप बोल सकते हैं। Thank you, Dada. I'm grateful for this wonderful session. My question is regarding a very common problem worldwide, which is stress. My question is that if a person has suffered from stress and is suffering from stress for many years, say 20 to 25 years, and has had impact on his memory and sleep issue. So what should be done apart from yoga techniques, pranayama, meditation, and asanas? Apart from that, what else can be suggested for eating? Some herbs or some diet you could suggest regarding that, please? Yes, I mean, with all of these, Suman, with all of these questions, I normally spend about an hour with a patient in my clinic. So these are, sorry, I have to apologize. These are fast. I'll get back to AJ in a minute. But Suman, so in Ayurvedic, we have, obviously we have ashwagandha. Okay. Ashwagandha is the Indian ginseng. Ginseng is also good. Okay. Now these are called adaptogens. No, they're special family of herbs. And they are for stress. They are for boosting the immune system, the nervous system. So definitely ashwagandha would be something that I would recommend to you. But there is a stronger one. And this one is called rhodiola. And rhodiola is from the northern. You can find it in the Himalayas. You can find it any Arctic cold area. Rhodiola rosea. No.
So this one is like 2 or 3 times the strength of ashwagandha. It was actually used by the Russian military. So that is one that I would use. Then getting back to the mineral supplementation. So the rhodiola and you can combine the two. Okay, the rhodiola and the ashwagandha. So, and an extract of 1:1 or 1:2, it'd be the 1:2 would be the weakest extract form. So then I would be looking at the vitamin B group, okay, especially B6 and B12. Now, one mistake that people make with the B group is that the supplements we can buy on the shelves aren't the best. They're actually made in we've got cobalamin, and that is actually made from waste material. What we want is we want methylated B group. So definitely go for the methylated B. It is much more effective. So those two herbs, ashwagandha and rhodiola combined, and a methylated B. We could go on, we could look at high doses of ascorbic acid as an antioxidant, but I think let's deal with the nervous system, Suman, first. So definitely the methylated B and rhodiola and ashwagandha. Now, getting back to AJ about protein. Sorry, Suman, have I answered enough of your question? Yes, Dada. Could you please specify the method and quantity also, ashwagandha and these things? Yes, normally with a 1:1 extract, and you need to usually one of the problems here is that I can grow ashwagandha in my backyard. I can grow rhodiola. I can't grow here. It doesn't grow where I am. I can grow comfrey, and I know it's like Oman with his food question, being a vegetarian. It's where the quality of the plant comes from. So I know if you have a garden and you can grow these herbs in your garden, you'll make sure that the soil is fertile. You'll make sure that there's no chemicals going on them. This is not the case in the global herbal market. Now, there is a lot of fraud. So you have to be you have to look at your supplier, your manufacturer very, very clearly. So that's the first step. Second step is that you need a 1:1 ratio extract. Please don't take powders because the powders aren't absorbed easily in your stomach. I mean, you're taking cellulose, it's just ground up plant material. So you're going to lose most of it. An extract will absorb 90%. So the thing is a 1:1, and I would be taking 15 to 20 drops 2 or 3 times a day. That's all. 15 to 20 drops 2 or 3 times a day of that. So yeah. And the vitamin B, I would double the dose on the jar. I would be moving to a therapeutic dose, not an RDA dose. So twice, 2 times. Okay, Suman. दादा एक चीज बताइए मुझे, अश्वगंधा के साथ जो दूसरा मेडिसिन हुआ, किसी को क्लियर हुआ तो मुझे ही बताइए, मुझे समझ में नहीं आया कि अश्वगंधा के साथ दादा दूसरा कौन सा मेडिसिन बोल रहे हैं? रोडियोला। Now, AJ, with your protein powder question, yes, like everything, like दादा बोल रहे हैं कि स्ट्रेस। Go on, Dio. Please go. Sorry, Dio. Okay. All right. So स्ट्रेस का जो कंडीशन होता है उसमें दादा रेकमेंड करते हैं अश्वगंधा और रोडियोला को 1:1 का रेशियो में लेने के लिए। मतलब जितना आप अश्वगंधा ले रहे हैं उतना ही आपको रोडियोला लेना होगा, और उसको पाउडर के फॉर्म में नहीं लेना है, उसको एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में यानी कि सोल्यूशन के फॉर्म में लेना है, क्योंकि पाउडर को शरीर आसानी से अब्जॉर्ब कर पाता है। इसमें आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर आप मिथाइलेटेड विटामिन B6 और B12 ले सकते हैं। अस्कॉर्बिक एसिड भी लिया जा सकता है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। और बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आप पौधा उगा रहे हैं,
अश्वगंधा आप कहाँ से ले रहे हैं, रोडियोला आप कहाँ से ले रहे हैं, उसका सॉइल फर्टाइल होना चाहिए, सॉइल उर्वरक होना चाहिए। अगर सॉइल का क्वालिटी खराब है, जो ज़्यादातर जगहों में होता है, तब उसका आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो एक अच्छे क्वालिटी, एक अच्छे प्लांटेशन में ग्रो किया गया अश्वगंधा या रोडियोला दे पाएगा। और ये सब चीज़ के लिए लागू है कि आप जो भी खाना या जो भी आप औषधि लेते हैं, वो एक अच्छे जगह से आ रहा है, एक अच्छे प्लांटेशन से आ रहा है जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, तो उससे आपका इफेक्ट उसका बहुत अच्छा दिखेगा। जी राकेश सर। One thing I wanted to say, Dada, in India, this ashwagandha powder and tablets are very common, and I have tried this ashwagandha powder by boiling in milk and drinking it, and sometimes with water also. But it did not suit me. And there were some digestive problems after taking it, and maybe some dose was not proper. I don't know what was the reason. So, like you are suggesting that it should be taken in liquid form, right, Dada? Now, with the herbal extract, so I could quite easily tell you how to make it yourself. Taking the ashwagandha and taking high quality vodka or pure ethanol, but definitely around about a 50-50 ethanol to water, and you soak 1 kilo of ashwagandha into 1 liter of that mixture. Now, you have to do it in stages. Yeah. This over a 4-week period will give you a 1-to-1 ratio, 1 kilo to 1 liter. So when you are taking 1 drop, so let's say you're taking 1 mil, 1/1000th of that liter, you're taking 1 gram of the plant. Same. Okay. But because the fiber and the plant material is broken down, you're getting the pure chemical in, which is, if I remember ashwagandha, withiana. So it's withiana alkaloid. It's going straight into your blood system. You're having no digestive issues. It is very, very strong. And yes, I don't recommend anyone taking a dried plant as a medicine because it's not strong enough. Okay, you have to take a lot of it to have any effect. And yes, it won't do your stomach any good. So that is what I would do. So yes, I mean, I'm sending to Viajana some material she can share if she wants to. Sending you the rhodiola aspects and the ashwagandha. So definitely an ethanol water extract. And if you have a problem with the ethanol, now you're only taking 10 drops to 20 drops, right? So you're not taking much ethanol at all. But if you're worried about it, you can simply heat it to around about 72 degrees for about 5 or 10 minutes, and all the ethanol will evaporate out, and you'll just be left with the pure water herb mix. So, but I usually don't worry about the ethanol. दादा बोल रहे हैं कि इसको घर पे भी बनाया जा सकता है, जो एक्सट्रैक्ट का बात कर रहे थे, तो उसका असर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उसमें हमको इथेनॉल और वाटर का 1:1 रेशियो में मतलब लेना है उसको। जैसे 500 ग्राम 500 मिलीलीटर ये इथेनॉल लेना है, 500 मिलीलीटर हमको पानी लेना है, दोनों को मिक्स करना है, और उसमें 1 केजी आपका अश्वगंधा को लेके साथ में उसको बॉईल करना है। और उसके बाद जो उससे सोल्यूशन निकलता है वो प्योर, मतलब उसको आप 4 हफ्ते तक उसको क्लोज कंटेनर में रखिए, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसका इफेक्ट जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल ये अश्वगंधा होता है उससे कहीं ज़्यादा रहेगा। तो ये दादा का कहना था। Thank you, Dada. Back to, can I answer AJ quickly? Yeah. Like anything, these protein powders are, there's good and there are bad ones. Okay. So with the young people, they need to actually look at the reviews, because a lot of them usually have
poor quality protein, but also they have additives, especially sugar, especially sweeteners and fillers. So getting a good vegetarian soy protein, you can even make your protein powder yourself. You don't need to buy it because soybeans are 40% protein, right? All you need to do is buy 1 kilo of soybean and cook them, dry them, powder them. You have protein powder. Acha hai, set hai. Nothing in it. So anyway, sorry, Dio, back to you. May I दादा ask बोल रहे one question? प्लीज गिव मी अ सेकंड। तो दादा बोल रहे हैं कि जो प्रोटीन पाउडर का बात हो रहा था, तो प्रोटीन पाउडर आपका अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और आप किससे आप खरीद रहे हैं। जनरली दिक्कत इसमें आता है एडिटिव के कारण कि प्रोटीन के अलावा वो और क्या डाल रहे हैं। जनरली वो कार्ब्स डालना पसंद करते हैं, चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं, वो चीनी का पाउडर बन के रह जाता है थोड़ा सा प्रोटीन के साथ, तो वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। तो अगर खरीदना ही है तो वो पहले आप रिव्यू देख के अच्छे से प्रोडक्ट को आप देख के उसका रिव्यू देखिए, उसका इंग्रेडिएंट देखिए कि कितना परसेंटेज हर एक मात्रा का ऐड किया गया उसमें। और अगर आपको मार्केट वाला नहीं पसंद है तो आप घर पे बना सकते हैं। 1 किलो सोयाबीन है, उसको कुक करिए, उसको ड्राई करिए, उसको क्रश करिए और उससे जो पाउडर बनेगा वो आपका सबसे बेस्ट सोयाबीन पाउडर, आपका प्रोटीन पाउडर आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन में 40% आपका ये प्रोटीन होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जी राकेश सर। एक मिनट राकेश, Mr. Paul, is it advisable to take? There are repercussion or negative impacts are also there if they are taking in excess. They are making their muscles and all that. They are taking too much, and then they stop going to gym and stop taking protein. So, is it advisable, or what do you suggest regarding that, Dada? So AJ, this is a philosophical, how we live our life. I have met people that meditate 4 hours a day, and they, in my opinion, they're doing too much, right? So they exceed. So because it's now affecting their work, their family, and the people around them. It's fine if you go into a monastery or you become a guru, then that's fine. 8 hours a day is no problem. So it's all about lifestyle balance. With protein, as long as it's a good protein, like soy or another vegetarian, pea protein is very good, and it's pure, then really the body is just going to discard what it doesn't use. The problem comes when we're taking protein and we're not exercising or we're not walking. Simple things. Walking, if we're taking protein and we're watching TV all day, or we're meditating all day, is that the protein is just going to overwhelm our organs. It's not going to be the best thing in the world. But yes, a natural protein, definitely 1 gram per kilo body weight is the optimum for everyone. I wouldn't be taking 2 grams. I wouldn't be taking 2.5 unless I want to be Arnold Schwarzenegger or something else like this. Yeah. So, yeah. Okay. Great. तो दादा बोल रहे हैं कि प्रोटीन पाउडर का इंटेक का जो बात हो रहा था, तो वो कम्प्लीटली आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको लेना चाहिए या आपको नहीं लेना चाहिए। कायदे से हर एक इंसान को प्रोटीन लेना चाहिए जितना उसका बॉडी वेट है। तो जैसे किसी का बॉडी वेट 40 किलो है तो उसको 40 मिलीग्राम उसको हर दिन 40 ग्राम प्रोटीन हर दिन, हाँ 40 ग्राम प्रोटीन उसको हर दिन लेना चाहिए। तो अगर उसका आपूर्ति वो खाना से नहीं हो पा रहा है तो वो ऊपर से ले तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब उसको प्रोटीन को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इन द सेंस कि उसका कुछ वर्कआउट का रूटीन नहीं है, ना कोई फिजिकल लेबर करता है, वो घर पे पड़ा रहता है या टीवी देख रहा है, या उसका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, ऑफिस में काम कर रहा है। तो अगर
आपका लाइफस्टाइल उस तरह का है कि आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं, आपका फिजिकल उतना लेबर होता नहीं है, तो प्रोटीन आपके लिए अननेसेसरी है। उतना आप ले सकते हैं जितना आपका बॉडी का वेट है, ताकि वो उसको मेंटेनेंस में काम आए, लेकिन उससे ज़्यादा लेंगे तो वो हार्म करेगा, वो नुकसान करेगा। ठीक सर। Okay, Rakesh, yes. Thank you, राकेश Paul. का Yes. Good morning, Dada. Namaskar, Dada ji. Namaskar. Dr. Paul Dada, it's a very, you can say the very outstanding and mind-blowing session. We are getting so much benefits from your insights and all. You're too My kind. question, You're very my kind. question, my question is, Dada, in India, around 30 to 40% people are suffering from the heart disease, and the main cause of the heart disease, the cholesterol issue. Okay, so I'm also suffering from this cholesterol. My triglyceride is on higher side. I'm not right now. I'm not taking any medicine. I'm taking just homeopathic medicine, or I'm doing exercise and yoga. Is it sufficient, or anything else I have to do to manage this cholesterol, Dadaji? Okay, first, the cholesterol discussion has been going for 40 or 50 years, and cholesterol is essential for healthy life. Okay, so when we discuss triglycerides and LDLs and HDLs and all these things, first of all, we have to understand that without them, we would die. So they are essential. So let's put them into a better perspective than what the doctors are telling you. Okay. So with that said, one of the things with the Indian subcontinent and the traditions of Hinduism that have been going for centuries, thousands of years, is that largely the population of India are vegetarian. Okay, so now we get back to the protein problem. Okay, so protein for your blood vessels. If your blood vessels are weak, they don't have enough of the building blocks to make them strong and elastic. Okay, they will rupture. Okay, and then you have this critical life-threatening condition. So you definitely need to increase your protein intake. Yeah. So that's one thing. Now, the recent developments from Japan, and it is made in North Korea, and I'm sure there are Indian companies making this at the moment, is we have now a medicine made from the fermented soybean and fermented rice. So let me just, because it's one of the products I make and I sell. And in a case of 3,000 participants in a clinical trial, it reduced clotting and clogging of arteries by up to 75% in 90 days. Yeah. So with that said, I will just post it online. I'm sending Viajana all this scientific stuff. I hope I'm not annoying her. So anyway, no, where is it? Sorry, I'm just going through my library at the moment. दादा बोल रहे हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल नेसेसरीली गलत नहीं है, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए सुचारू ढंग से वो ज़रूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अगर प्रोटीन हमको ढंग से नहीं मिल रहा है, सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो हमारा नर्व्स जो है वो रप्चर कर सकता है, वो ब्लास्ट कर सकता है, फट सकता है, और उससे अलग तरह की बीमारियां जैसे स्ट्रोक वगैरह जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं वो सब हो सकती हैं। तो एक निश्चित मात्रा पे तो लेना ही चाहिए, लेकिन दादा बोलते हैं कि ये जो कंडीशन है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट वाला, तो उसके लिए दादा ने एक ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड डेवलप किया है। सोयाबीन
के साथ राइस को फर्मेंट करके, मतलब उसको सड़ा के, do we have to prepare the powder, Dada? No, unfortunately, it's quite complex to make. So it's called natto, Natto, kinase, Yeah. natto kinase. Oh. And these are natural compounds, but this is a biofilm dissolver. Okay, so it enters the bloodstream and it removes plaque from the inside of veins and arteries. I'll post a scientific paper on it up onto the conversation. And the other one is serrapeptase. Serra, Serra, Peptase. So, yes, a lot of research has gone into these. You take 2 or 3 tablets in the morning, 2 or 3 tablets in the evening for about 90 days, and it removes that potential for blocked arteries and an embolism. So yes. Both of these are natural, Dada? They're natural. And from where can we get them? Normally online, you can get them online, but once again, I find that the Korean and Taiwanese, but that's only because I'm on this side of the world, but I'm sure they're being manufactured in India somewhere to some standard. So I'll just load up a scientific paper on it. दादा बोल रहे हैं ये जो ब्लॉक्ड आर्टरीज वाला जो सिनारियो है जिससे हार्ट प्रॉब्लम होता है, उसके लिए 2 जीवन बचाने वाला ड्रग को डेवलप किया गया है। एक नैटोसाइनेज होता है, एक सेराटेप्टेज होता है। दोनों का 2 टैबलेट लेना है दिन भर में, सुबह शाम, आपको 90 दिनों तक लगातार लेना है। और दादा का कहना है कि 75% लोगों ने जिसको लिया है उनका ये ठीक हो गया है कंडीशन 90 दिन के अंदर अंदर। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जी नवल दादा। Okay, thank you, Paul. Yeah, Mr. Nawal from Jaipur is there. He want to have a question. Nawal, please. Namaskar, everyone. So my question is about my daughter. She's facing the problem of vitiligo, white patches in the skin. So is there any kind of support we can provide her for better recovery? Because she is already taking the medicines from different doctors from last 4 years. I am trying to get her cured. Okay, so the doctors have already explained to you what vitiligo is. So vitiligo is a imbalance in the melanin production in the skin. So you have. Yes. Yes. Yes, actually, they have called me that this is an autoimmune disease. That is why her own immunity is killing her melanin cells. Naval, once again, I wish to be careful on how I now advise you. Okay. Normally, when doctors are faced with a mystery, they will put it into a group. Okay. And one of the groups is autoimmune. It's very badly abused. Okay. So melanin naturally is regulated by the pituitary and the pineal gland in the brain. Okay. So that is one of the aspects. An autoimmune disease does not really, if it's, never mind. Okay, I will say that I doubt your doctor's diagnosis. I would doubt it. Now, to have a look at if she's suffering from redness, swelling, bloating, irritable bowel syndrome, any of these? Yes, earlier she was facing a very bad constipation. Okay, well that could be, was that before she started taking the drugs or after? No,
after that, she started, she got some patches on her face, and then I went to a doctor. First, we Okay. treated Mm-hmm. homeopathically. The homeopathic medicine was given to her for around 1.5 years. After that, No. we started Ayurvedic, the natural medicines from Delhi. There is one person who cures especially for vitiligo. There are thousands of his patients, and they are being getting cured. And so has he helped your daughter? Yes, perhaps I think so that his medicines are working. That's good. So what you need to focus on is, so how old is your daughter now? She's 8. 8. Okay. So definitely, I would be looking at the pineal, pituitary gland, thyroid gland. I would be looking at her sleep habits. Now, if she has been taking antibiotics for a while, has she been taking antibiotics? When she was of 3.5 months, she got a swelling in in her neck area, this Mm-hmm. area, Yeah. and we went to a doctor, and they prescribed her antibiotics for around 1 month. When she was 3. When Okay. she was 3 months, Yeah. For 1 month. and at the last, they get it operated. Okay, now, once again, so this is normally around here is the parotid glands, okay, and lymph tissue, right? So, any removal of that will have a dramatic imbalancing impact upon the body. Your daughter would be a more complex discussion for me. I would definitely be looking at reversing the antibiotic impact as well. So definitely the gut biome. Now she's constipated. The gut biome has been disrupted as well. So, yeah, it. Nowadays, she's not facing constipation. She's regularly. Okay, Uh, that's good. nowadays she's Okay. not facing. It was his earlier conditions. Mm-hmm. She was facing constipations, and nowadays she's okay with his gut, and having a great hunger. Okay, good. Well, that's healthy for a young child, so that's nice. Um, what medications is she on at the moment? She's taking two kind of liquids just after her meals, and Mm-hmm. two tablets twice in a day for 3 days in a week. It's a strange dosage. The tablets are Ayurvedic and natural, or they're from a GP? They are all Ayurvedic medicines. Okay, then, Naval, I would simply advise your focus to and your reading and research to look at the pineal gland and the pituitary gland in the brain. And I usually would not get or complicate another Ayurvedic doctor's prescription or protocol unless it wasn't working. But you're telling me that it is working. So I think, It is working. It is working, but actually, firstly, her whole face was covered with white patches, and now there is only a few areas around her lips and nose. okay. Rest So of this all is is good. cured. Continue. Rest of- Okay, thank you. Thank you, Naval. Namaskar. Any precautions for her food or drinking or anything which we can provide her to support the medicines? No, it's as we talk, it's the quality of the food coming in, and definitely understanding that we'd be looking at with a young girl who hasn't reached her transition period, so she's not having any blood loss, so she's not having any iron deficiencies at the moment.
So no, it's all good. I would be looking at possibly zinc and some trace minerals. Yeah, whereabouts are you living, Naval? I live in Jaipur. It is a place in Jaipur. Rajasthan, a pink city. Okay, yeah. So yeah, it's just making sure that your food is coming from your you're not having any chemicals coming in. Glyphosate can become a problem, especially with early development and also endocrine. Glyphosate is an endocrine disruptor. Okay, same with plastics. So, but you need to make sure that the food you're getting is not being contaminated by the glyphosate, which I know is still being used in India, et cetera, et cetera. So, one of the tricks, it might be something for you to play with, is definitely magnetic therapy on the third eye. So definitely placing a magnet here stimulates the pineal and pituitary action. So it will stimulate melanin production. Oh. Hmm. Magnetic therapy, can we do it by ourselves at home, Yes, or we need some absolutely. expert? Absolutely. Just place a magnet on her forehead. Huh. For how much time? Until it starts to itch. So normally just try it for 5 minutes or 10 minutes, as she's going to sleep at nighttime. It will come off while she moves around. It's just a mild magnetic field that stimulates the production of melanin in the body. What should be the size of the magnet? Normally a rare earth magnet, but you can use a normal household magnet. So yeah. The Thank you. stronger the magnet, the more effect. But with a girl of 8, I wouldn't be using a very strong magnet at this point in time until she became, 21, 22. Same with young boys. Okay, thank you. Namaskar. Namaskar. दादा कहते हैं ये वेटिलिगो जैसे ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है, तो वो क्योरेबल है, अनक्योरेबल नहीं है। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे जिंक और अलग मिनरल्स मतलब खाने में जाना चाहिए। मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो बेसिकली 2 ग्लैंड्स को ध्यान में रखना है कि एक पेनियल ग्लैंड और दूसरा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेटेड रहे, वो एक्टिव रहेगा तो ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन होगा। जो मेलानिन का लॉस हुआ है, जो स्किन पे दिखता है, उसको भर देगा वापस से। और ग्लाइफॉस्फेट जो है वो ध्यान देना है कि वो खाने में नहीं जाए। उसका ध्यान देना है कि कोई इम्प्योरिटी खाने के साथ नहीं जा रहा है। मैग्नेटिक थेरेपी देने से मतलब मैग्नेट को सर के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ पे रखने से उसका फ़ायदा मिलता है। 5 मिनट 10 मिनट रखा जा सकता है जब तक इचिंग वहाँ पे शुरू नहीं हो जाए। नॉर्मली कोई सोया हुआ है या लेटा हुआ है तो अपने आप वो गिर जाता है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस केस के लिए। जी दादा। पल्लवी प्रिया दीदी आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। Namaskar, Dr. Paul. This is Namaskar. Pallavi here. Yeah, so I'm very happy to see you in video first time because previously I had connected with you over the WhatsApp call through Yes. Advaitanand Dada. Yeah. So Dr. Paul, actually, this time my mother is suffering from kidney stone disease, and it is located in the lower calyx in the kidney. So doctor suggested to this kidney stone is only removable from the surgery. It's not through medicine and all. So is there any way in the naturopathy that any medicine or anything so that it will be naturally removed from the kidney? Because the stone size is very big. It's around 11 to 12 mm, and it's present in the lower calyx. So that's Okay. the Is it causing your mother any pain? not so much, not a severe one,
but yeah, Okay. sometime it's a little bit. All right. So we're not in any rush then. So that's good. So yes, there's been recent developments. We're using ultrasound to break up these stones and pass them out naturally. So I don't know whether your doctor is aware of that therapy. This is modern medicine. So using the ultrasound technology to break up the calcium, because that what we have. Definitely with people have been having a very good effect with alkalizing the body. So alkalizing with lemon juice and apple cider vinegar. Definitely these two. Okay, so with your mother Mm-hmm. and the kidney stone, there is one herb, and it's called stone root, actually, specifically because it was used or is used to break up kidney stones. So let me get the. So you can buy it online. Uh, yeah, I would be looking at stone root, my dear Pallavi. Okay, Mm-hmm. specifically that one. So it's Collinsonia is the Latin name. Okay. But I will just throw up a scientific paper. I'm sending them via Jana on the ultrasound breakdown of kidney stones. Okay, so she can take that along to the doctor or find a clinic that does this. It's non-invasive and it's having very, very good effects. So I'll Yeah, send this. actually, Dr. Paul, doctor also suggested one of the therapy, that is lithotripsy, sound wave therapy. So he breaks the stone and through that sound wave therapy. So is it safe, or is it a kind of surgery or what? I don't know, but he No, no, suggested that. it's exactly the same. He has described it in a different way, but it's exactly the Okay. same as what I'm recommending to you. Oh. So yeah, it's ultrasound, Mm-hmm. ultrasonic. So yes, it has a very good. Let me just get this paper across. That is what I would be doing straight away, and then I'd be using the herb, stone root, Collinsonia, as a deterrent against it forming again. Okay. Thank you, Pallavi. Yeah. Thank you. Thank you so much, Dr. Paul. I was sorry to hear about your father. Yeah. Mhm. Thank you. Thank you. नमस्कार दादा, मैं बीना बोल रही हूँ। Namaskar. How are you, my dear? मुझे टाइफाइड था और कल शाम में जो ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया था, नर्वस आ गई थी मैं बहुत ज्यादा ही। टाइफाइड तो चल ही रहा है उसका। Dada, she is saying that she has a condition of typhoid, low blood pressure, and she gets stressed once a while, so it's the cure. Sorry, dear, did you say low blood pressure or high blood pressure? लो। Low, okay. Okay, so, and if I heard this correctly, you were suffering from typhoid. Dio? Yes, Dada. Yes, Yeah, yes. yeah. Well, this is an interesting development. Okay, so with typhus, first of all, let's try and get rid of the typhus. That's quite a serious condition. One of the one of the best um, um, you'd be looking at sulfur compounds. You'd be looking at broccoli sprout extract for this, as well as garlic extract, and I'd be looking at thyme oil. But the sulforaphane that is made from your broccoli sprouts is a very powerful detoxant and also
it helps with viral load and bacterial load. So I'm a bit surprised that you still have typhoid and you're attending this meeting. I don't, as we've been talking, I don't particularly subscribe to antibiotic use if you don't need it, but typhoid is a very serious condition. So, yeah, I'm not recommending antibiotics at the moment, but anyway. So definitely with the low blood pressure. Um, Low blood pressure can be a mystery to many doctors. I'm sure you've seen a few. It can be genetic. Uh, are you having problems? You get dizzy when you stand up. Is that a problem for you? आप जब खड़ी होती हैं तो आपको चक्कर आता है क्या? हाँ, हल्का तो आता ही है, लेकिन दोबारा हुआ है टाइफाइड ये, एक बार नहीं, पहले भी हो चुका था। ठीक है। She is हाँ, getting चक्कर आता है। repeat typhoid. This is the second time she's saying, and she gets the dizziness when she stands up. That's natural for her. Okay. All right. So what we want to do, okay, is to remove the typhoid. So I would be doing definitely long courses of garlic. Now, I know that garlic is a little bit of a controversial plant in the diet in India, but we're talking about it as a medicine. You be using aged garlic extract, or you can just be using fresh garlic and taking around about 3 to 4 cloves every morning. It will definitely detoxify you. It is one of the best things for rebalancing the gut and the biome, but also getting rid of bacteria such as and amoebic problems such as typhus. With that, definitely using, you can use a topical oil, but thyme oil is very, very strong. So I wouldn't be using thyme oil on the skin. I'd more be making tea with the thyme, fresh thyme plant, and having that as often as you can. Now, thyme is quite, it's not unpleasant, so I don't recommend having a sweetener with it. I would just be using thyme. You might want to add a little bit of cinnamon or a little bit of flavor, another herb just to flavor it a little bit better. With the low blood pressure, once again, we'd be looking at exercise. Walking would be the best one to get the cardiovascular rate up. We'd like to get some movement on the metabolic rate in that. We can recommend things like caffeine, but that only treats a symptom, it doesn't cure. So, yeah. Okay, so it's thrown me off, knowing that someone's got typhoid, okay, which is, you don't hear every day someone's being so casual about this. It's a debilitating infection. So start with the garlic. I'll let you translate in a second. So start with the garlic, thyme, fresh thyme tea, at least 3 times a day. Let's just do that for the typhoid, and I'll continue with the low blood pressure in a minute. I want to confirm with you before I tell her. It's sulfur extract, broccoli extract, thyme oil. What exactly is thyme oil? Thymus vulgaris is a herb. It's normally a Middle Eastern European herb. It's in America. It's all around the world now, but the origin is from these places. But it's the compound within thyme is thymol, and thymol was antibiotic pre-1910.
So this was brought into India with the British. It was brought into Australia by the British. It is a very powerful antibiotic, natural antibiotic. दादाजी नमस्कार. Do we have to mix it? एक second, दीदी. Do we have to mix it with water before giving A tea. it to them? Have it as a tea. Yes. लाइम टी बोला ना दादा, लाइम टी, नींबू वाली चाय. Well, you can have lime, but it won't be. Yeah. दादा बोल रहे हैं टाइफाइड. हाँ सुन रहे हैं दादा. टाइफाइड को क्योर करने के लिए आपको सल्फर का एक्सट्रैक्ट लेना है. ब्रोकली का आप एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं. टाइम ऑयल आता है, आप उसको ले सकते हैं. उसको चाय के साथ कुछ बूंद मिला के आप उसको पी सकते हैं. 3 से 4 कली गार्लिक का यूज कर सकते हैं आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए. आप फिजिकल लेबर जो चलना फिरना होता है उसको आप बढ़ा देंगे तो वो आपको हेल्प करेगा इसका निजात पाने के लिए. जी. दादा पूनम दीदी आप पूछ. हाँ नमस्कार दादा. मैं अभी एक्चुअली मेरे दादा चाय के साथ क्या लेने बोले थे दादा? एक टाइम ऑयल चाय आता के है साथ? दीदी. टाइम ऑयल, टाइम टाइम OIL. हाँ वो टाइम आप ऑयल. देख लीजिएगा आपको चाय मिल दूध जाएगा. वाली तो नहीं, चाय तो फिर लाइम वाली चाय, मतलब नींबू में थोड़ा सा उबाल के ना, चाय के कुछ पत्तियां थोड़ी सी उसमें मिला के ले लेना है, टाइम ऑयल. दादा नमस्कार. जी. ओके, अभी पूनम दीदी, एक मिनट, अभी पूनम दीदी आ रही हैं, उसके बाद एक और होगा, बाकी फिर दादा को नेक्स्ट दादा टाइम. दादा को कहीं निकलना भी है. दादा हाँ दादा को हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे, रखेंगे फिर से. दादा को कहीं निकलना है तो हम लोग दूसरे सेशन में फिर से दादा को बुलाएंगे. दादा फिर से हम लोग के बीच में आएंगे. लास्ट क्वेश्चन पूनम दीदी का ले हाँ लेते हैं. पूनम दीदी का लेके खत्म करेंगे. So, Paul, it is last question for today, and I will contact you for next session after, say, next week. Okay. Okay. Sounds good. Will you be able to give us time, please? हाँ मैं बताना चाह रही हूँ. मेरे ना नेक में ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं लेटती हूँ, जब लेटती हूँ, लेट के खड़ी होती हूँ, उठती हूँ, तब मेरे को बहुत ज्यादा ये नस पे नस चढ़ी है, मुझे नहीं समझ आ रहा, बहुत दर्द पेन होता है. तो मैं काफी एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद मैं खड़ी होती हूँ, काम करती हूँ. चलते फिरते मुझे ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन लेटते समय बहुत ज्यादा तकलीफ है. उसके लिए मैं नेचुरोपैथी सेंटर भी जा चुकी हूँ. 4-5 दिन कराया मैंने, लेकिन उन्होंने सर्वाइकल बताया, डॉक्टर ने भी सर्वाइकल ही बताया है. तो पीछे मेरा कराया उन्होंने सर्वाइकल का, लेकिन मेरे उल्टा बैक पेन होने लग गई है, जो शोल्डर वगैरह दर्द वगैरह होते हैं. मैं एक्सरसाइज तो करती हूँ, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं है, डेली दर्द होता है. तो उसका क्या है सोल्यूशन? नस कहाँ चढ़ती है, गर्दन में दीदी? हाँ लेफ्ट साइड में. दादा पुरानी प्रॉब्लम हो गई है, 2-3 महीने हो गए शायद. जी जी, निरुपम बोलो. She is asking that she has a constant neck pain. Her nerves gets entangled with each other, and especially while she is lying down or something like that, she gets a lot of neck pain. And she usually has to do a lot of exercises and stuff just to get up from the bed. And she's saying that she's all right while she's in an upright posture when she is moving and stuff like that. But whenever she is like lying down on the bed, then the pain gets exaggerated. She went to a naturopathy center, and she was diagnosed with cervical issues. And after like they gave medicines and stuff like that for it, she got back pain. And she does the exercises, and nothing is kind of helping her or curing her situation. So what should be done over here? Okay, so with Poonam, she has lower hip pain. She has pain in her glutes. She has pain in her glutes. Yes, and does she? Please ask. दीदी आपको बैक पेन होता है ना? जी हाँ, ऊपर ज्यादा बैक पेन भी. Back pain, yeah, there is back pain, but it is mostly on the upper side of the back.
पहले exactly on the glutes. दादा पहले बैक पेन नहीं था, लेकिन इसके बाद जब मैंने कराया है नेचुरोपैथी सेंटर 4-5 दिन गई, उसके बाद बैक पेन भी हो गया अभी, पहले नहीं था। She's saying that she didn't have the back pain before she went to the naturopathy center, but when she went to the naturopathy center and they diagnosed her with a cervical issue and like tried to cure it off her, she got the back pain and it is continuing. So please. Okay. So, deal. Okay, Poonam. The spine is like the foundation of a house. So we go from the feet up the legs to the hips. Okay. And then the hips go up to the spine and so forth to the neck. Okay. If anything lower down is in balance, it will come to the neck. Okay. Can we start with that deal? दादा नो दादा Understand. बोल रहे हैं कि आपका जो स्पाइन्स का ये डिजीज होता है वो पैर से शुरू होता है। पैर से ऊपर ऊपर जाइएगा तो आपके बैक पे आएगा, फिर आपके पीठ पे आएगा और आपके फिर गर्दन के ऊपर जाते हुए आपके ब्रह्मरंध्र तक जाता है वो। और इसके बीच में कहीं पे भी डिफॉर्मिटी हो रही है, कहीं पे भी अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो आपको सीधा आपको गर्दन के पीछे आपको दर्द होगा। प्लीज कंटिन्यू। तो उसका क्या So- इलाज है मतलब? Yeah, he's telling. Poonam, you can take a pair of your favorite shoes, and turn them over and look at where they're wearing. Okay, if they're wearing the same, then your legs are fine. If they're wearing unevenly, then one leg is pushed, they're out of balance by the hips. Deal? दादा बोल रहे हैं कि आपका जो भी जूता आपका फेवरेट है, आप वॉकिंग करती हैं जो भी है, उसको पलट के देखिए, उसका सोल्स को पलट के देखिए कि जैसे खुरदरापन आता है ना, कि पहले शुरू में आप जब खरीदे हैं तो उसका एक शेप होता है, लेकिन वो समय के साथ वियर एंड टियर आके वो चला जाता है। तो आपको देखना है कि अगर वियर एंड टियर इवनली आया, मतलब दोनों का इक्वली और एक साथ, मतलब दोनों में बिल्कुल सेम जैसा मतलब वियर एंड टियर आया, अगर आपको दिख रहा है किसी में ज्यादा आया है, किसी में कम आया या अनइवन आया, किसी का लेफ्ट पोर्शन में आया, किसी का राइट पोर्शन में आया, तो आपका हिप्स के कारण मतलब उसमें वो हो रहा है कि आपका जो आप प्रेशर अप्लाई करती हैं पैर से। सीधे पूछिए, आपके जूते दोनों बराबर घिसते हैं या कोई कम ज्यादा घिसता है? और बोलिए। नहीं सेम है दादा। एक बात और मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे को यूरिक एसिड ये जो पैर में है प्रॉब्लम थोड़ा सा है ऊपर, नहीं, एक पैर में, एक पैर में राइट साइड में, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है। Dada, she is saying that she has some issue in one leg due to uric acid issue. No, yeah. परहेज भी किया मैंने। Okay, no. So Poonam, let's just. This is going to be difficult. Let's try and it should be simple, but I take it that Poonam is sitting down by her computer, right? If Yes, she has a only mobile. ball, if she has a ball or a little something like a ball that she can put underneath one of her buttocks, yeah, just place it underneath one, and see if there is pain. And if there is no pain, then move it to the other side and sit on it and see if there is pain. There should be pain on one side only. Can we try that, Poonam? दादा क्लियर करिए। दादा बोल रहे हैं कि आपको एक बॉल लेना है, जैसे स्पंज का बॉल आता है मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको आप लेके अपना बटक्स के नीचे रखिएगा। दोनों बटक्स के नीचे एक एक बार करके रखना है। दोनों में से किसी में एक में अगर दर्द हो रहा है तो हमको पता चल जाएगा किस साइड में मतलब किसके कारण दिक्कत आ रहा है, तो वो आपको एक बार करके देखना होगा। अगर आपके पास अभी है तो आप कर सकते अभी देख है सकते तो करके, दादा कह रहे हैं अभी है तो करके बता दीजिए, अगर है तो। है बॉल? लाइक बॉल मतलब कैसा बॉल? स्पंज का बॉल आता है ना आपका, वो पिचक जाता है, स्पंज का आता है। यस हाँ दादा। हाँ वही वाला आपके पास अगर है। स्माइली वाला होता है जो। जी स्माइली वाला। हाँ है। उसको आप करके देख सकती हैं।
तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन जो है उसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको बता देंगे अगर। Paul, she will do that later on, but just you suggest general what you can do. We know your time is less, so you can suggest general treatment, and during next class we will finalize Poonam Didi case. So for Poonam, thank you very much, AJ. Dhanyavad. For Poonam, the lactic acid in one leg and not the other leg doesn't make any sense. It will be in both legs. Okay, so this is not a cause. Okay, so what we're dealing with is we're dealing with one of the systems we started today with, which is the muscular system of the body. And as we grow older, not only does our thinking become rigid, but our muscles become a muscle memory. They become rigid. They become imbalanced. So what you can do, Poonam, is what I get people to do is to put a cushion behind my neck so that my head doesn't touch my mattress when I'm lying down. In this way, I stretch the spine. But this is just a relief. It is not a cure. So the thing is, it's usually the piriformis muscle, the piriformis muscle in the hips that is locked and it's turning our hips around. And if you understand engineering, it travels all the way up. And by the time our body is trying to correct, right, it is worse the further away from the cause. So they can't fix your neck without fixing the foundation of your house. Yeah, and that is your hips. Your hips are out of balance. जी दादा बोल रहे हैं, जैसे शुरुआत में ही बोला था दादा ने कि स्पाइन्स आपका फाउंडेशन होता है, स्पाइन्स घर होता है जहाँ से प्रॉब्लम नर्व्स का स्टार्ट होता है। तो हम लोग जैसे बस देखेंगे कि गर्दन में दिक्कत आ रहा है तो गर्दन को ही ठीक किया जाए, तो उससे उसका उपचार नहीं हो पाएगा। उससे बस उसको अब एक प्रिवेंटेटिव इस तरह का हो जाए कि आपको कुछ समय के लिए दर्द नहीं होगा, कुछ समय के लिए आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे दादा एग्जांपल दे रहे हैं कि पीछे आप फोम अगर रखते हैं अपना गर्दन के ऊपर, तो आपका सर जो है वो टच नहीं करेगा डायरेक्ट मैट्रेस से, तो उससे आपका गर्दन में तो पेन नहीं होगा जो आपका इमीडिएट अभी इशू आ रहा है, लेकिन उससे कभी भी आपका क्योर नहीं मिलेगा। क्योर आपका मिलेगा जहां से ये शुरुआत हुआ है। दादा ये भी बोलते हैं कि आप जो बोल रही हैं कि आपका एक पैर में यूरिक एसिड है या लैक्टिक एसिड है और दूसरे पैर में नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, होगा तो दोनों में होगा। तो हमको फाउंडेशन को ठीक करना है, मतलब स्पाइन्स को ठीक करना है। स्पाइन्स आपका नीचे से होके उठता है, तो उस पोर्शन को जब ठीक कर लेंगे तो आपका डेफिनेटिव क्योर मिल जाएगा हम लोग को। तो आप अभी के लिए वो जो बॉल वाला बताए थे वो आप करके देखिए, और अगले हफ्ते जब मिलेंगे दादा से तो उसके हिसाब से फिर डायग्नोसिस दादा बता देंगे। ठीक है, वैसे मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ, उसी से थोड़ा सा चलती फिरती हूँ, काम करती हूँ। और जो बताया ना उससे पता लग जाएगा। जो बॉल वाला बताया ना कि आप एक बार लेफ्ट साइड में बटक के नीचे रखिए, दूसरी बार राइट साइड में, तो उससे जो है पता लग जाएगा कि पेन होनी चाहिए, एक साइड में होगी दूसरी साइड में नहीं होगी, तो बताइएगा तो फिर उसका बता देंगे। So okay, ठीक है, थैंक यू दादा, थैंक यू। My so pleasure. For today, So, AJ, for Poonam, she needs to do the pigeon pose. She needs to do the pigeon pose in yoga often. Pigeon pose. I don't know what it's called in Hindi. We'll find it, दादा. Thank you so much. दीदी, पूनम दीदी, आपको कबूतर बनना है, दादा ने जो बोला है कबूतर, तो वो हम देख लेंगे। वो ओके दादा, we'll convey her that pose, what is that, and because we are doing daily from this 6 to 7 a.m. we are doing daily yoga postures and all, and today because yesterday it was our Ekashi fasting, so next day after Ekashi we don't do that. After fasting one day we don't do it, otherwise we are daily doing 1 hour yogasana and all this time. So just last question before leaving, that if constant ear infection is there, one question is there, so what you will suggest for that, Dada?
ear infection. Okay, so again, I mean, without seeing inside the ear to see what is there, but definitely with I use thyme oil. Okay. You can use clove oil. Okay, definitely clove oil can go inside the ear, but thyme oil can only go on the outside, not inside. But thyme oil is incredibly strong antibiotic and antibacterial foundation. Clove oil as well. Clove oil is very good, but yeah, either or. Okay. Mhm. So for today, we'll finish it today. And really, it was मैं एक बार इसको बोल देता हूँ तो मतलब दादा बोल रहे हैं कान का जो इन्फेक्शन है उसमें आपको टाइम ऑयल या फिर क्लोव ऑयल होता है आपका लौंग का तेल, आप इसको डाल सकते हो। लौंग का तेल होता है कान के अंदर तक प्रवेश कर जाता है और टाइम ऑयल बाहर से ही उसको मतलब ठीक करता है इन्फेक्शन को, तो टाइम ऑयल ज़्यादा ये कारगर होता है। Dada, I had one question that thyme and lime, are we not confusing on this? It's not lime oil, right? No, It's it's thyme. 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 You're right, Dio. Okay. It is thyme. Yeah. Thyme oil. Okay. Mhm. So thyme एंड oil. दादा बता रहे हैं कि थैंक यू निरुपम। एंड दादा बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल ऑयल है, टाइम ऑयल। तो बहुत पहले से जो है बहुत यूज़ किया जाता है, तो इसको यूज़ करेंगे, हम लोग भी करेंगे। एंड सो इट वाज रियली ऑसम, वंडरफुल सेशन दादा, एंड थैंक्स अ Thank you. लॉट। As we expected, it is much more than that. And I hope we will continue. And after say 7 days or 10 days, I will contact you. And we would like to have your suggestions and advice many times here. And you see, still there are 40 plus people and so many on YouTube also just listening you. More than 100 were there when you started, and so many have got their solutions for their problems. And in the last, I will request Vanjana Anand Didi, who is the head of this channel, and I would like to thank Advaitanand also, Dada Advaitanand from Brazil, and he just gave me your number and I contacted you. But I think our association will be now for a very long period, and we'll keep seeking advice from you. And I'll ask Venna Didi and final words from you, and then we will finish. Venna Didi. Thank you so much, Dada. Wonderful session. I want to you, please come soon, next week. Yeah, same Hello. week. Thank you. Okay, Dada. Mhm. You please convey me after then next session. दीदी Well, नमस्कार। yes. हेलो दीदी। दादा अभी सवाल नहीं ले सकते हम लोग, आज का टाइम हो गया। अगले हफ्ते दादा आएंगे वापस, तब हम लोग ले लेंगे, ठीक है? दादा को भी आप काम अपना में बाहर निकलना है, इसलिए हम लोग का फिर से लिख के होगा, रखें। जल्दी ही होगा, क्योंकि आज सैटरडे है, नेक्स्ट वीक मतलब 2-3 दिन के बाद ही। तो मैं कोशिश करूंगी दादा का जल्दी से जल्दी सेशन हो। तो आप सभी धैर्य रखिए, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन को रखिए, अगर संभव है तो क्वेश्चन भेज दीजिए। मैं दादा को पहले से वो क्वेश्चन सारा भेज दूंगी, ताकि दादा अच्छे से आप लोगों के पास में आते ही सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद भी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। तो सभी से आग्रह है कि क्वेश्चन अगर है तो कब तक आएंगे दीदी? इसी वीक में ले लेंगे। आज सैटरडे है ना, कल संडे है, तो मतलब इसी वीक में 7 दिन के भीतर ही दादा फिर से आएंगे हम लोग के बीच में। हम भी नहीं पूछ पाए। कोई बात नहीं दीदी, बाद में पूछ लीजिएगा, पहले नहीं आए ना। सुबह 6 बजे से हो रहा है दीदी, 2.5 घंटे 3 घंटे होने वाले हैं, तो इसलिए उनको कहीं जाना है, प्लीज, ठीक है ना? मेनी क्वेश्चन ड्यूज दादा। हाँ, okay. So thank you Didi, thanks a lot. And I would like to just in the last ask Robert Paul to please say a few lines, and then we will finish. Thanking you a lot. You are great. Thank you very much, Paul. Please convey a few lines, and then we will finish today. Well, I'd like to thank everyone, and thanks Dio for changing my words into Hindi. Bless you.
AJ, Vyanjana, thank you very much for inviting me, and to everyone, I wish you all the best with your journeys. And yes, we can, if we all help each other, then it's definitely a nice journey that we are all on. Thank you very much. Thank you from India, from everybody, from Bhutan, from California. So many people have joined, and we all are extending our heartfelt thanks to you. Thanks, Paul. We'll see you. Thank you, Paul. Dada. Awesome. Thank you.